Okay. Hello. So आज मैं सिर्फ रिविजन करने वाला हूँ. आई मीन सिर्फ प्योर केमिस्ट्री. दैट इज मेमोराइजेशन और बहुत सारा. सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लेट्स जस्ट से अच्छा म्यूजिक लगाते हैं. एंड या मतलब मैं बस पढ़ा हुआ हूँ बेड पे. या और करते हैं रिवाइज करते हैं. सो हियर वी गो. और बाय द वे ये प्लेलिस्ट मुझे पता नहीं है किसकी है. प्लेलिस्ट का नाम क्या है? कोजी नॉस्टैल्जिया गेमिंग एंड एनिमे लोफी वॉट एवर. चलो स्टार्ट करते हैं. मतलब कुछ बोलने नहीं वाला हूँ इस बार. काफी लंबा रहेगा ये. यार कुछ दिनों में जेई है. सो प्रिपरेशन. और ओके. टू एस टू प्रोटीन वन एल्यूमिनियम नियॉन थ्री एस टू. तो पता है आपको. ओके. इनर्ट पेयर इफेक्ट. Gallium, lanthanum, thallium have s orbital electrons strongly attracted. Okay, right. S orbital strongly attracted, right? Yeah, okay. DF or orbital से कम shielding है, that's why. Plus the oxidation stability decreases down the group. Understandable, right? Group 13 है ना, right? Group 2 और वो तो S block में आते हैं, so yeah. BX3 is an incomplete octet for boron. So BX3 plus X minus BX4 minus. Understandable. Okay, crystalline boron is not reactive. Crystalline aluminium forms Al2O3. Okay. Amorphous boron and aluminium. नाइट्राइड्स फॉर्म कर रहे हैं. फाइन. सो बोरॉन नाइट्राइड फॉर्म करता है. इंटरेस्टिंग. इसके आगे तो रहने वाले बोरॉन के नीचे के कौन से एलिमेंट्स हैं? एल्यूमिनियम वो तो करता ही है. गैलियम, इंडियम, थैलियम ये भी वो भी करते होंगे. ज़्यादा मेटालिक रहेगा ना. सो या आई गेस बाकी सारे नाइट्राइड फॉर्म करते हैं. ये जो है ये पर्टिकुलरली हाई टेम्परेचर पे नाइट्राइड फॉर्म करेंगे. और बाकी के क्या? ऑक्साइड. ओके. व्हाई नॉट नाइट्राइड? आई डोंट नो. लिखा नहीं मैंने. Reaction with acids and bases. Boron is inert with considerable temperature. Okay, nice. And aluminium plus HX gives ALX3 plus H2. Right, so aluminium hydrogen से ऊपर है ना. You know वो सीरीज में क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. Whatever. यार वो भी आई थिंक मेमोराइज करनी चाहिए. सो हाइड्रोजन के ऊपर कौन से थे? आयन था, एल्यूमिनियम था, बहुत सारे अलग अलग टाइप के थे. जिंक वगैरह. नीचे इमीडिएटली कॉपर है, राइट? या हाइड्रोजन के ठीक नीचे. आई गेस क्या करना चाहिए? विकी पे सर्च करना चाहिए शायद से. सो चलो विकी पे सर्च करते हैं. वेयर इज विकिपीडिया? हाँ मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नोट्स नहीं पढ़ा. मेरी गलती उसमें मुझे टाइम नहीं मिला. खैर मिला तो बहुत है एक्सेप्ट कि मैं इतना यूज नहीं करता हूँ. व्हाट डू वी कॉल इट? लेजी. ओ इससे याद आया.
वो जो लिगांड स्प्लिट सीरीज रहती है, क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो एक्चुअल में इस बारे में है ही नहीं कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि या क्रिस्टल फील्ड थियरी काफी लेम है उससे। मेरे माइक से क्या 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 ओके, ये लैग हो रहा है ये। हाँ ठीक है, मुझे नहीं देना है, मुझे पेमेंट नहीं कर दी whatever। हाँ, मुझे वो सब नहीं देखना, मुझे बस तुम सीरीज दिखाओ। राइट, सो पहले स्ट्रॉन्टियम, कैल्शियम, थोरियम, व्हाट इज दिस, व्हाटएवर पीआर जो भी होता होगा, नाइट्रोजन, हाँ दैट्स वियर्ड। हे वेट, अभी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कैल्शियम तो काफी ऊपर होना चाहिए, नाइट्रोजन का क्या है? ओके, HN3, इंटरेस्टिंग। क्या ये रिएक्शन मुझे पता नहीं। लिथियम, अच्छा यहाँ पे पहले लिथियम होता है फिर वापस नाइट्रोजन आता है, फॉर्मिंग NH2H। ओके, रुबिडियम है, फिर पोटेशियम, बेरियम। भाई ये सारे तो ओके, हाइड्रोजन कहाँ पे है? और ये सारे स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल की क्या है? और रेफरेंसेस, ओके ये मुझे नहीं पता। हाँ, स्टैंडर्ड पोटेंशियल सी है, राइट। मतलब हाइड्रोजन का जीरो रहेगा, तो अपने को जीरो मार्क पे जाना है। एंड वेयर इज द जीरो मार्क? या एग्जैक्टली हियर। ओह अच्छा, तो H रेडिकल नहीं, H2 तक का रहता है पोटेंशियल, फाइन, अंडरस्टैंडेबल। और इसके ऊपर कौन से है, नीचे कौन से, वो देखना है। आयन है, आयन वापिस कार्बन इसके ऊपर का है, बट सिर्फ एक पर्टिकुलर रिएक्शन, एज सच कोई एलिमेंट एक नहीं रह सकता, बिकॉज फिर वो एलिमेंट के हर रिएक्शन ऊपर रहे वो। इन दी एंड जो अपन पोटेंशियल पोटेंशियल बोलते हैं, एक्चुअल में वो अपन कैलकुलेट कर, मतलब सॉरी, मेजर नहीं कर सकते, कैलकुलेट कर सकते, राइट। थिंग इज कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, वो काइंड ऑफ लाइक डेल्टा जी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, जो ज़्यादा यूजफुल है। मतलब क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का कैसे डेल्टा जी, एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का डेल्टा जी कैसा रहता है, और राइट, दैट्स व्हाट इट प्रोपोर्शनल टू, व्हाटएवर। ओके, वेट, लिथियम के और रिएक्शंस नीचे भी है, हाँ ऐसा फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज हर रिएक्शन का अलग पोटेंशियल रहेगा, देन या वी जस्ट वांट रिडक्शन पोटेंशियल्स, बट ऑफ व्हाट रिएक्शन? रिडक्शन की हजारों रिएक्शंस होती है। आई मीन ऑफ कोर्स कैटायन प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड देन दैट इज अ पोटेंशियल, समथिंग लाइक दैट, राइट। और अगर अपना E पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि वेट, E पॉजिटिव है, देन व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स रिडक्शन होना चाहता है, सो अपने को नेगेटिव चाहिए, ताकि फिगर आउट कि कौन सा जल्दी रिड्यूस नहीं होगा, तो वो स्ट्रॉन्गर रहेगा एक्चुअली, राइट, इट विल बी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट और अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाटएवर। सो अपेरेंटली कार्बन भी काफी सारी रिएक्शंस के ऊपर है, सो कार्बन प्लस H प्लस एन इलेक्ट्रॉन, ओके, HCO, अच्छा, इंटरेस्टिंग। नहीं, मुझे सिर्फ कैटायंस वगैरह चाहिए, आई डोंट वांट H प्लस इन्वॉल्व इन देयर। यहाँ पे तो हर जगह H प्लस, हाँ राइट, ये है Fe3 प्लस एंड 3, राइट, दैट्स गिविंग Fe सॉलिड, और इसका पोटेंशियल इतना है। मुझे सिर्फ एक का चेंज चाहिए, तो तुमने 3 इलेक्ट्रॉन भी डाल दिए इसमें, इट्स प्रेटी यूजलेस, क्योंकि या क्यों, ओके, इस पे कुछ खास है नहीं इन्फॉर्मेशन यार, बहुत ही बुरी तरह से लिखा हुआ है पूरा। ओके, वेनेडियम, वेट, वेनेडियम ही ना, आई डोंट नो, वी सिर्फ ना, कोबाल्ट, राइट, सो कोबाल्ट ऊपर है, आयन ऊपर है हाइड्रोजन के, और क्या है, कॉपर, ओ कॉपर ऊपर है इसके, बट आई थिंक कॉपर नीचे होता है, राइट, तो कॉपर का एक, अच्छा ये अलग टाइप का कॉपर है, राइट,
वो किससे कॉम्प्लेक्सेटेड है वो भी इंपॉर्टेंट है. सो CuNH3 4 2 प्लस ये समहाउ राइट, इसका इस चीज का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, सॉरी ज्यादा है, वो ज्यादा निगेटिव था, ये ज्यादा पॉजिटिव है, राइट. मतलब कि ये कम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कॉपर इन अमोनिया. बट कॉपर इन H2O वो कहाँ पर, और H प्लस तो ऑफ कोर्स इन वाटर रहने वाला है, राइट. वो कैसा रहता है, सेलिनियम एंड देन 2H. मुझे हाइड्रोजन नहीं चाहिए उसमें, आई डोंट वांट हाइड्राइड्स और एनीथिंग. कहाँ पे चला गया कॉपर, तो कोबाल्ट है यहाँ पे, दैट्स Cu2O, आई डोंट वांट दैट. कॉपर कॉपर, सो टर्न्स आउट कि या ये सही नहीं है, इसका कोई शॉर्ट नहीं है क्या फॉर्म, बिकॉज इतना तो मैं याद करूँ तो हो गया. लेट्स सर्च, यू नो ओके, नहीं इतना पिच दिया इनको डायरेक्टली, इसमें कोई शॉर्टर फॉर्म नहीं है जो हाई स्कूल टेक्स्ट बुक्स में वैसा कोई फॉर्म नहीं है क्या आपके पास. apparent reduction potentials of biochemistry pH 7, interesting. Or references, we don't want that. Okay, seems कि अपने को कुछ खास information तो मिल नहीं रही है, so yeah, not interesting. Okay, just move on. Boron is inert till considerable temperature. Aluminium plus Hx gives AlX3 plus H2. Understandable. HNO3 creates oxide layer on aluminium, preventing further oxidation. राइट सर, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते. सो ये कई बार क्वेश्चन भी पूछते हैं कि नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं रिएक्ट करता विद सम मेटल्स. यूजुअली कैसे वो रस को खा जाता है हमारी बॉडी में, बट या कुछ मेटल्स को नहीं खा पाता. क्यों, बिकॉज इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो वो एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर डालता है और फिर वो लेयर पेनिट्रेबल नहीं है, दैट्स व्हाई. आई गेस जिंक का भी ऐसा ही होता है ना, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा. Okay, so apparently it's a good reducing agent. Hey, wait. You're saying NaOH को reduce कर दिया इसने? Understood. I mean O तो already 2 minus में था, सिर्फ ये H जो था वो plus जो उसका था अपने को उसको हटाना है. So for that you gave it electrons. Of course, some pure metal use कर रहे हो. That's gonna be a reducing agent in whatever circumstance. Right. So I assume ये dry नहीं aqueous है. Okay. तो क्या वो H2 के साथ नहीं react कर रहा है basically? I guess yeah. वो पकड़ के NaOH नहीं ले रहा है, which is reacting with H2O. जो भी उसका H2 मिलता है just reduces that. तो वहां से H2 निकलता है and OH माइनस क्लिक हो जाते हैं. And that's why यहाँ पे 4 OH माइनस है. Although यहाँ पे हर Na के लिए एक ही था, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गए, राइट. वो इसने रिड्यूस की, राइट. बट फिर NaOH राइट, उसका pH कम बढ़ाने के लिए, ओके राइट, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं बिकॉज इस रिडक्शन में राइट, आई गेस समथिंग लाइक दैट. सी रिडक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है, तुम्हारे पास एल्यूमिनियम है जो कि सॉलिड है, प्लस उसमें वाटर है. सो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट है ही कांस्टेंट, यू नो दैट. और वो रिएक्ट करके दे गिव H2 which can be soluble in water I guess, and also OH minus, basically ALO OH3, right. In probably वो as aqueous phase रहने वाला है. So what we would want is कि ALOH3 ज़्यादा soluble हो, that will be good for us. Also H2 को escape करना चाहिए. So yeah, right. तो H2 को escape कैसे करवाए? I mean okay, ये तो irreversible reaction, that's pretty obvious. But अगर irreversible नहीं होती, it was being used to create H2. फिर अपने को H2 को निकालना है और उसको वापस नहीं आना है अंदर. So shouldn't the concentration of H plus be higher? तो फिर अपन उसको कम क्यों कर रहा है फिर? Interesting. I don't know, ऐसा क्यों हो रहा है? Right, why NaOH?
आई मीन ये ऑलरेडी AlOH3 तो क्रिएट कर ही रहा है, सो व्हाट्स द बिग डील। हाँ ओके, तो मैं एक्स्ट्रा OH पुट करोगे तो फिर ये इस पे कॉम्प्लेक्सेशन कर पाएगा, एंड देन मे बी ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। क्या AlOH3 प्रेसिपिटेट करता है? इसके बारे में था ना हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। कुछ दिया तो है नहीं, अभी तो अपन स्टार्ट ही कर रहे हैं। विल सी हाइड्रोक्साइड्स। HNO3 creates oxide layer on aluminium, preventing further oxidation. Okay. Reaction with halogen gas. All react to form EX3 except thallium and iodine. All यानी कि अच्छा सारे जो ये metals हैं, so boron, aluminium, everything except thallium and iodine. Why would that be? I mean that's a very good metal and this is not so good non-metal. And these form what? EX3. ओके या ओके, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एनायन पे, उतना अच्छा कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, मतलब उतने ही वो ज्यादा चार्ज को रिड्यूस कर, मतलब इस पे जो चार्ज बैठेगा ना थैलियम पे, वो अपने को इस तरह से रिड्यूस कर रहा है। सो फॉर दैट बट अनफॉर्चुनेटली थैलियम बहुत ही ज्यादा अच्छा क्योंकि बहुत ही नीचे आया है ना ये, या बहुत नीचे, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड मेटल। इसका मतलब है कि ये इनफैक्ट पोलराइज नहीं कर पाएगा उतना अच्छा, राइट? इससे चार्ज हटा लो और उसको उतनी एफिनिटी नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉन की फिर, विच मीन्स कि ठीक है यहाँ पे कम अच्छे कोवेलेंट बॉन्ड पड़ेंगे और रिपल्शन होगा, फिर टूट जाएगा पूरा। सो राइट, मतलब कि ठीक है ना, TlX3 इज प्रोबब्ली व्हाट्स इज गोना फॉर्म। कहाँ पे चला गया? अच्छा ये TlX3 भी नहीं बनाता है। ओह ओके, सो AlX3 है बट TlX3 नहीं, TlI3 पर्टिकुलरली, TlCl3 हो सकता है, राइट? तो ये तो ओके है, ऐसा हो सकता है। बोरैक्स, हाँ इसका बारे में बहुत कुछ पूछते भी है। जस्ट डू दिस करेक्टली दिस टाइम। Na2B4O5 OH4 2 minus not 8H2O और Na2B4O6। ए अपन ने मेटाबोरेट जो था, ओके ये अलग टाइप का मेटाबोरेट, राइट? उसका अपन ने स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया था, वो मुझे कहीं और देखना पड़ेगा, बट फाइन, राइट? तो जो B4O7 2 माइनस वाला आयन है वो रहेगा बोरैक्स में, एंड अलॉन्ग विद दैट Na2, और 10 ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है बेसिकली। अच्छा ये जो है वो आई थिंक हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं, आई शुड से इट्स जो एक्वस फॉर्म रहेगा वो ये है, एंड दिस इज सम काइंड ऑफ क्रिस्टल फॉर्म, राइट? तो क्रिस्टल्स में ऐसा रहेगा, आई डोंट नो, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि वो सॉल्यूशन में है, आई डोंट नो यार, बट ठीक है ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा तो पानी मिलाओ, राइट, ऐसा एक्सपेक्टेड। ओके नहीं, ये पूरा का पूरा हाइड्रोलाइज हो गया, ये चीज नहीं है दैट केस। ओके इंटरेस्टिंग। तो इनमें से कौन सा एक्चुअल में रहता है? आई डोंट नो। तो ये एनहाइड्रस है, उसे तुम H2O मिलाते हो, दिस हैपेंस, H2 यानी कि एक्सेस में ऑफ कोर्स, देन यू गेट NaOH expected because Na था इसमें, and then B4O7 2 minus plus H2O, right? उसका के पास H3PO3। oh and this is like BOH thrice, so ये एक्चुअल में ब्रॉन्स्टेड एसिड है ही नहीं। हाँ वो मैंने बाद में दिया हुआ है, वॉट एवर। सो ये मेटाबोरेट है Na2B4O7 डॉट, हाँ वाटर हटा रहे हैं अपन इसमें, फाइन, and when you heat that it forms NaBO2 plus B2O3। what's B2O3? borax speed when you pull this, of course, yeah इसके बारे में मैंने डेमोन्स्ट्रेशन भी देखे थे यूट्यूब पे, ऑफ कोर्स रियल लाइफ में कहा मुझे उतनी लग्जरी है। सो ठीक है, NaBO2 plus P2O3 liquid, P2O3, how would that look? So बोरॉन ऑक्साइड, मीन हाइड्रोक्साइड अपने को पता है, बोरॉन का ऑक्साइड कैसा, आई मीन ओके अपने को एक तो पता है स्ट्रक्चर P4O7, आई एम गेसिंग कि इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स रहने वाले विद ऑक्सीजन, एंड देन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, राइट? आई गेस
ये भी किसी ना कुछ में साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने वाला है, नॉट श्योर अबाउट दैट, वॉट एवर। इसको कूल करने में बोराक स्पीड क्रिएट होती है जो क्लास में। ओह बाय द वे मुझे याद है स्ट्रक्चर से कि अ, जो स्टार्टिंग के ग्रुप्स के एलिमेंट्स है, राइट, सो फ्लोरीन वगैरह जो वो टाइप का ग्रुप है एकदम स्टार्ट का पीरियड, उनकी चार्ज डेंसिटी इतनी हाई, चार्ज डेंसिटी उनकी साइज इतनी छोटी है कि इनफैक्ट वो डबल बॉन्ड्स, यू नो, आई गेस वो डबल बॉन्ड्स, या वो डबल बॉन्ड्स इजीली फॉर्म कर लेते, नहीं किसी में मिक्स कर रहा हूँ शायद से, पर ऐसा कुछ तो भी है कि उनका और डबल बॉन्ड क्रिएट करने की एबिलिटी का कोई तो भी कोरिलेशन है। सो फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकता है खुद के साथ में, बट सिलिकॉन नहीं कर सकता, इनफैक्ट खुद के साथ नहीं, ऑक्सीजन के साथ में नहीं कर सकता, राइट, या आई डोंट। तुम कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाओगे, इट्स गोना फॉर्म अ ब्लू बीट। ओके, इंटरेस्टिंग। मैं इसे याद से रखूंगा, लेकिन चलो इसको याद करने का ट्राई करते हैं। ओके, फिर तो स्ट्रक्चर बोरैक्स का, सो इट कंटेन्स P4, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ। ओके, it contains P4O7 2 minus with Na2 plus, that's anhydrous। अगर तुम इसमें H2O मिक्स करते हो, so excess में it completely hydrolyzes to H3PO3 and NaOH, right? So an acid and a base, right? More technically I think वो BOH4 minus and Na plus फॉर्म करना चाहिए इसको, because in the end अगर वो सेम solution में है तो वो मतलब कर ही लेगा ना रिएक्शन, इट्स pretty obvious। ओके, अगर उसको अपन पार्शियली हाइड्रोलाइज करते हैं सो थोड़ा बहुत H2O डालना उसमें, सो इट, या तो तब आप क्या फॉर्म करते हैं, सो कैन टेक अप टू 10 H2O इन इट्स क्रिस्टल, राइट। जो लास्ट टू H2O इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर चल जाएंगे। वेट, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, और मैं देख के बोल रहा हूँ। सर ओके, इसमें हाइड्रोलाइज, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में दी नहीं है, उसको हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे नहीं, उसको क्या बोलेंगे कि तुमने पानी को यूज कर लिया क्रिस्टल में, क्या जो भी रहता है, हाइड्रेशन ऑफ क्रिस्टल, आई डोंट नो, मैं कुछ नाम बना रहा हूँ। So Na2B4O7 got 10H2O plus Na2B4O7, it's metabolite after heating, so right, ये anhydrous form। फिर उसको और हीट कर तो लिक्विड क्रिएट हो जाता है, एंड देन तुम लिक्विड को कूल करते हो, इट फॉर्म्स अ बोरैक्स स्पीड, तो उससे कोबाल्ट ऑक्साइड डाल दो, इट गोना फॉर्म ब्लू बोरैक्स स्पीड। Is that God of War का music? Okay, no, Forest Temple, I don't know what that is। बोरिक एसिड, BOH थ्राइस, ओ या ये जो है वो लुइस एसिड है, पहली चीज ऑफ कोर्स जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है, अरे यार। ओके, इट्स अ लुइस एसिड नॉट ब्रॉन्स्टेड, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इन सॉलिड फॉर्म, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद सोपी सरफेस। सोपी तुम्हें समझ रहा होगा, फॉर एग्जांपल ग्राफीन जो है, ग्राफीन ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट रहता है, बिकॉज राइट वो बहुत सारे बेसिकली लेयर्स रहते हैं ना एक के ऊपर एक, यू नो, बिकॉज ऑफ लाइक जो पाई बॉन्ड्स की अट्रैक्शन, राइट, काइंड ऑफ लाइक वैसा है आई गेस ये, यू नो, बिकॉज थिंक अबाउट इट, ऑक्सीजन जो है दैट कैन कोऑर्डिनेट विद बोरॉन्स, जो कि यू नो अगर इसके नीचे आ गया एक बोरॉन तो इस तरह से कोऑर्डिनेट कर पाएगा, सो मे बी उस वजह से ये इसे लेयर फॉर्म में है। मुझे एक्चुअली पता नहीं है ऐसा क्यों है, बट आई एम गेसिंग कि एक थोड़ा बहुत ग्रेफाइट जैसा है। और हाँ, अपन इंडियन ग्रेफाइट का एक्चुअल में एक अल्टरनेटिव देखने वाले, N3B3, राइट, उसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आई डोंट नो उसका नाम नहीं है, इनऑर्गेनिक बेंजीन तो सिंगल उसका बेसिस रहने वाला है, मुझे पूरा वो स्ट्रक्चर चाहिए, वेल वॉट एवर, अपन बाद में देख ही लेंगे ना। So it's sparingly soluble in cold water. Understandable. Wait, why sparingly? Of course, वो H plus फॉर्म करता है जब भी वो हाइड्रोलाइज होता है, so it's not easy because
इन द एंड वो पोटेंशियल चाहिए उसको. ओके, इट्स कंप्लीटली सॉल्युबल इन हॉट वाटर व्हिच मेक्स सेंस, राइट. जितना तुम उसको हीट करोगे उतना ज़्यादा सॉल्युबल पाएगा, बिकॉज उतना वाटर को अपना KW बढ़ाने की ताकत मिल जाएगी, सो ज़्यादा देर तक H प्लस झेल पाएगा, राइट. या preparation Na2B4O7 plus HCl that forms NaCl plus POH. अपन तो कर चुके हैं, बस अपन इस पे Na या ओके अपन इस पे H2O अगर मिक्स करते हैं, what do we get? Just BOH thrice and NaOH, which is basically NaBOH4 minus, right. अब अपने को सिर्फ we have to remove that extra OH minus and then you're done. To do that, of course, just acid add कर दो इसमें, HCl H2SO4 whatever. इस केस में HCl, so it forms NaCl and BOH3 बस. हाँ राइट, ये नीचे गिर रहा है बिकॉज इन लोगों ने कहा था इट्स स्पेयरिंग सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. तो अगर मैं इसको कूल करता हूँ वाटर को, देन इट्स गोना गो डाउन, राइट. आई मीन आई होप सो. राइट. सो अगर मैं बहुत सारा एसिड डाल दूँ इसमें, then it cannot act as an acid anymore because already बहुत सारा H plus है, so it's gonna go down, right. और फिर क्या है, वो जो नीचे प्रेसिपिटेट हुआ उसको निकालते जाओ, you get a reversibility in the thing. और क्या है, BX plus H2O that forms POH3 down, right, plus HX, understandable. Okay, I mean I really think if BOH4 minus और अच्छा वो हो नहीं सकता because already इसमें H plus है, so no way that can form. फिर ठीक है, बस नीचे गिर जाएगा. So okay, अब मुझे समझ रहा है इसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं लोग. बस एसिड डालो and then it's gonna come out. I mean of course वो BOH3 बनाना इतना मुश्किल नहीं है जिसको हाइड्रोलाइज करना है, पर उसको प्रेसिपिटेट करना मुश्किल है ना. So for that you have to add acid and okay, come down. और क्या B2H6, तो BH3 ऐसे रहता है, राइट. आई मीन ऑफ कोर्स मान लो से बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसके पास में एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसमें डाल दो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के. एंड ये जो चीज़ है, ये बनाना शेप चीज़, ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है बेसिकली. सॉरी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है ये. 3 इलेक्ट्रॉन में कुछ और होता है, राइट. या ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. So colorless toxic gas, टॉक्सिक तो समझ सकते हो, BH3 अच्छा खासा रेड्यूसिंग एजेंट होता है, डाल दो उसे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, हो गया तुम्हारा राइट. BH3 लोग यूज करते हैं फॉर रिड्यूसिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट. सो इवन दो वो ऐसे मतलब हाइड्राइड डोनर तो है नहीं, तो वो वैसे काम नहीं करता है, बट इट कैन एक्चुअली वर्क रियली नाइसली बिकॉज या मतलब वो जस्ट कर जाता है काम. Still a good Lewis acid and then it can okay, तुम बाद में देख ही लोगे. वेट इसमें तो है ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसे, सो मुझे वो दिखाने पड़ेंगे. वॉट एवर, पहले तो पूरा पढ़ लेते. इट बर्न स्पॉन्टेनियसली इन एयर, B2H6. मतलब लग तो अनस्टेबल रहा है बट स्पॉन्टेनियसली क्यों बर्न करेगा. सो इट फॉर्म्स B2O3. यार इसका स्ट्रक्चर तो देखने पड़ेगा, व्हाट इज B2O3 लाइक. I guess we should look for it. What is B2O3? Sorry, I mean मेरी टेंडेंसी इस वैसी है कि मुझे बस देखना ही पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या है सब कुछ. And as we are at it, अपन B4O7 भी देख लेंगे. Okay, I just want the structure. No, I don't want the preparation. अच्छा इसको प्रिपेयर करने के लिए तो मैं H3 भी लगता है. हाँ. And then you got HPO2 plus H2O. अच्छा तो इसको बस हीट करते जाओ and then you will get. नहीं तुम कर क्या रहे हो, या तुम हीट ही कर रहे हो, तुम इसको और कंपोनेंट से ब्रेक कर रहे हो, एंट्रोपी फेवरेबल है और H2O निकल जाएगा बाहर. ठीक है. भाई मुझे इसका स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे ये सब नहीं दिखाना है. एक इंसान को स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकते तुम लोग.
सीरियसली हाँ इधर सो ओके the crystalline okay exclusively composed of BO3 triangles. BO3 triangles. I mean SiO4 triangles okay थे BO3 okay understandable एक बोरान अंदर and then तीन oxygens right. Let's see मुझे इसका स्ट्रक्चर एक बार इस पे डाल के देखना चाहिए. B2O3 स्ट्रक्चर क्या पता कितने रिलेवेंट स्ट्रक्चर्स देगा ये. नो पेजेस विद दिस. ठीक है B2O3 का पहला वाला ही हो गया था. और ये क्या दिखा रहा है CaTiO3 है इसका मैंने राइट स्पाइनल्स आई डोंट वांट दैट मुझे ऑलरेडी पता है वो. नो आई डोंट वांट क्रिस्टल स्ट्रक्चर जस्ट वांट B2O3 यार. और क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं इसका मुझे एक्चुअल केमिकल स्ट्रक्चर चाहिए वो दिखा नहीं रहा है. It's glassy boron oxide. Right. So अपना जो दूसरा राइट अपना जो बोरॉन बीट था उसमें भी B2O3 क्रिएट हुआ था ना राइट. सो इसलिए ग्लासी है अंडरस्टैंडेबल. It's pyroxal rings, which are six-numbered rings composed of alternating three coordinate boron and two coordinate oxygen. Disordered models have the density with हाँ ठीक है मुझे नहीं चाहिए इसकी डिटेल्स. थोड़ी सी इसका स्ट्रक्चर दिखाओ. तुम्हारे से नहीं है तो वैसे बोलते ना मुझे. I don't think ऐसा है. Oh, come on. ये मुझे ऑफ करना चाहिए था. Whatever. खैर नहीं है इसमें. अब अच्छे सोच सकते कैसा. बट वो बोल रहे हैं कि BO3 जो ट्राइंगल्स है कंप्लीटली उससे बना हुआ है. विच लुक्स करेक्ट टू मी. मतलब ऐसे बहुत बार होता है ना कि क्या राइट फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज में वैसा हुआ था सिर्फ SiO4 टेट्राहेड्रॉन से बना हुआ है. सो समथिंग लाइक दैट. इसका स्ट्रक्चर मुझे देखनी चाहिए. Okay, I don't want this. अरे यार मुझे पिक्चर दिखा रहा है. I just want to see this thing. So ये तीन ऑक्सीजन है as you. This is boron. और ये जोड़ा हुआ है एक और से और फिर एक और से. Okay. Sorry. मतलब कि बेसिकली ये एक लेयर के ऊपर लेयर टाइप की चीज हो रही है. बट इसके नीचे बोरॉन है एंड नॉट ऑक्सीजन. वो तो उन्होंने दिखाया वैसा है. क्या पता एक्चुअली होता होगा कि नहीं होता होगा. बट राइट वी गॉट अ थिंग दैट yeah. So हर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड है दो बोरॉन से और हर बोरॉन तीन ऑक्सीजन से. दैट्स व्हाई B2O3 राइट. एग्जैक्टली. So मतलब बोरॉन जितने भी होंगे that times 3 that's the number of bonds basically right. and जितने भी ऑक्सीजन होंगे that times 2 that's the number of bonds. तो जितने ऑक्सीजन है वो राइट बोरॉन is to oxygen are in the ratio 3:2. Like 2:3 because boron times 3 and then oxygen times 2. That's why B2O3. Understandable. Somehow it works out. Whatever. Okay. So you're saying ये अच्छा है ना. B2O3 ग्लासी है. Nice thing to remember. मतलब ये एक्सप्लेन भी करता है कि बोरॉन बीड ही क्यों है. Why it's not something else. बीड क्यों है बेसिकली. Okay. So इसकी प्रिपरेशन कैसी है. First of all, it burns spontaneously in air. मतलब कि B2H6 plus O2 gives B2O3 plus H2O plus lot of heat. हाँ ये सही लग रहा है because B2H6 में already hydrogens जुड़े हुए हैं which doesn't look good. I mean boron is pretty positive.
हाइड्रोजन भी काफी पॉजिटिव है। जितना बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस उतना ज्यादा वो स्ट्रेंथ रहती है ना, पॉलिंग स्केल तो वैसे ही इसको डिफाइन करती है। और वो मैक्सिमम टाइम्स करेक्ट है फॉर ऑलमोस्ट आयोनिक इंटरेक्शंस, राइट? या तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेगा ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट्स बाय लॉट्स ऑफ हीट। इट्स लाइक तुम CH4 को जला रहे हो, ऑलमोस्ट लाइक दैट, एक्सेप्ट कार्बन का सल्फर से ज़्यादा रिसेम्बलेंस है, बोरॉन से नहीं है, वॉट एवर। So BF3 plus Li, okay, LaH, right, हाँ लग ही रहा है ना, दैट्स गोना फॉर्म BH3। ये BF3 है और यहाँ पे तो हाइड, हाँ ठीक है, तो समझ गया मैं। NaBH4, तो तुम ऑलरेडी जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है तुम उनको यूज कर रहे हो। व्हाई इज दैट द केस? हे वेट, क्या BH4 में ऑलरेडी राइट, क्या इसमें ऑलरेडी तुम्हारे पास BH3 अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये जस्ट NaH प्लस BH3 है टेक्निकली। सो तुम ये भी भला कैसे क्रिएट कर सकते हो? आई डोंट नो, बिना BH3 के तुम ये कैसे क्रिएट करोगे? वॉट एवर। और क्या इंडस्ट्रियल मेथड, राइट, आई थिंक ये लैबोरेटरी मेथड तो क्विकली क्रिएट करने के लिए। ओके, इंडस्ट्रियल मेथड यानी कि क्या? BF3 plus NaH for a form B2H6 plus NaF. Understandable. And what else? B2H6 plus H2O forms BOH thrice plus H2. मुझे लगा ही था ना कहीं तुम NaH वगैरह यूज करने वाले। इसमें भी तुम देखो ना, NaH ऑलरेडी इसमें यूज कभी ना कभी किया हुआ होगा, तभी तुम ऐसा उसमें फॉर्म कर सकते हो, राइट? ऑलरेडी बना हुआ BH3 दिया और फिर तुमने NaH डाला और फिर तुमने वापस उसमें I2 डाल दिया फॉर oxidizing it. What's even the point of doing this? Anyway, अच्छा ये भी हाइड्रोलाइज वैसे ही होता है एज यूजुअल। ओके, और क्या चीज थी? NR3, हाँ ऑफ कोर्स, ये जो चीज है दैट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, राइट? फॉर्म्स H3B minus N plus R3। रिमेंबर BH3 अच्छा खासा लुइस एसिड है, सो इट्स टेकिंग लोन पेयर फ्रॉम नाइट्रोजन फॉर्मिंग दिस थिंग। बट साथ में अब ये चार्ज हो गया तो ये एक्चुअली में अच्छा H माइनस डोनेटर भी है, सो व्हाई नॉट जस्ट डोनेट हाइड्रोजन, राइट? आई मीन अगर तुम इसको छोड़ देते तो वुडंट जस्ट फॉर्म, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे डोनेट किया एंड देन इट्स गोना फॉर्म HN, नहीं ऐसे डायरेक्टली छोड़ देता है, राइट? इट्स गोना फॉर्म H प्लस N3 और समथिंग। वेट, नहीं, that doesn't look good, right? वो H minus तो already, yeah, okay, okay, that's not a pathway, right? तो फिर ये करता क्या exactly? कुछ भी नहीं, ओके, इसका कुछ भी नहीं है इनफैक्ट, राइट? इससे नहीं बनता है ये, इस, ओके। अच्छा अगर ये हुआ B2H6 plus NH3 gonna form this thing, हाँ एक्चुअल में ऐसा है, राइट? सो या मतलब ये चीज थी H3B माइनस एंड NH3 प्लस इन दिस केस। अब वो H प्लस और H माइनस को हटा सकते हैं अपन, यू कैन फॉर्म H2 और वॉट एवर। सी एग्जैक्टली what I'm talking about, H2 अपन निकाल सकते हैं and then all you have is just H2B and then NR2 और फिर वो चेन को प्रोपोगेट करो and you will get this thing probably, right? तुम हर इसके ग्रुप को देखो ना, इट्स बोरॉन, नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए था, अब नहीं है बिकॉज वहाँ पे रिएक्शन है। सो H2 अपन इरिवर्सिबली निकाल देंगे तो फिर ये मिल जाएगा एंड दिस इज स्टेबल, राइट? दिस इज वेरी स्टेबल, दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। इसलिए ये आगे चेन नहीं फॉर्म करता, अदरवाइज ये सॉलिड केट होता पूरा पूरा। That's why it forms P3N3H6, that's inorganic benzene। और हाँ अगर तुम इसको एक्चुअली आगे रिएक्ट करवाते हो, it can actually form the chain, right? तो ये H माइनस H प्लस को रिएक्ट करवा तो ये पूरा निकाल दो, जिसका फॉर्म BN B3N3 and then after that react it by coordination basically and then go, you got the thing।
हाँ ये तो मुझे पता है, ये तो ठीक पता है। ये जस्ट PH3 प्लस हाइड्राइड होगा, फाउंड दिस गाय। तो बस इतना ही था इसमें। आई थॉट मैंने इसका ज़्यादा लिखा होगा, बट मैंने बहुत ही कम लिखा यार। वॉट एवर। ग्रुप 14। मुझे बस ये प्रॉब्लम है कि शायद से मेरी चार्जिंग जल्दी खत्म हो जाएगी, एंड इफ दैट हैपेंस अपने को चार्जिंग पे जाना पड़ेगा। हाँ ओके। ग्रुप 14। अब स्मार्टफोन की चार्जिंग कितनी? इट इज 91%। ठीक है, अपन अल्टरनेट कर सकते हैं इन दैट केस। ओके, अब अपन कहाँ पे जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू ग्रुप 14। सो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, राइट। हर एक में जो पी सबशेल है उसमें, राइट ओके, उसमें चार चार का प्रॉब्लम है। तो वैसे चार फिल करें, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन दे देगा। ओके, नो प्रॉब्लम। और आयनाइजेशन एनर्जी वाइज, कार्बन इज मोर देन सिलिकॉन, इज मोर देन जर्मेनियम, इज मोर देन टिन, दैट्स द यूजुअल थिंग। बट फिर समहाउ टिन इज लेस देन लेड। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ। ये पहले भी थोड़ा सा हुआ था ना वैसा, राइट। इसमें तो बहुत ही ड्रास्टिक हुआ सब कुछ चेंज। ये तो कुछ हो रहा है। सो बोरॉन बहुत कम है, राइट। इट्स जस्ट 88। पहले एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, एंड समहाउ बोरॉन बहुत ही, ओह सॉरी, एटॉमिक रेडियस में पता नहीं क्या कर रहा हूँ। ओके या अंडरस्टैंडेबल। सो फिर ठीक है कि हाँ, बोरॉन का एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस यूजुअली। और हाँ, गैलियम का कम है इंडियम से, एंड दैट्स लेस देन थैलियम। इसमें एल्यूमिनियम जो है दैट्स प्रॉब्लमेटिक। उसका अचानक से एटॉमिक रेडियस काफी बड़ा है। That's not in the trend at all. Hey, Indian Thallium का सेम है almost, you know. Well, I think उसका कुछ भी reason भी था. I don't remember, but whatever. लेकिन उनका बहुत बड़ा है. Does it have to do anything with d orbitals? नहीं, नहीं. I don't think that's the case. Right, मतलब उसमें अभी तक d orbital का पार्टिसिपेशन है नहीं एग्जैक्टली। एल्यूमिनियम के पास में अगले पीरियड के डी ऑर्बिटल्स यूज करने को है, बट उसको उसके इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करने वाले डी ऑर्बिटल्स कोई है ही नहीं। सो हाँ, wait, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दिस थिंग, राइट? एंड देन नियॉन इज जस्ट, या इट डजंट हैव डी ऑर्बिटल्स। तो ये कैसे हुआ? ये अजीब है, इसका एटॉमिक रेडियस इतना बड़ा कैसे? वेल व्हाटएवर। ओके, इस केस में आयनिक एनर्जी में ये सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम है, और कुछ भी नहीं है। ऑल आर सॉलिड्स, ओके, राइट। वेट अ सेकंड, पहले भी सॉलिड्स ही थे ना? कुछ और था? खैर, तब उनको कुछ दिया नहीं था। आई मीन, इट मस्ट बी दैट ऑल आर सॉलिड्स, right? Aluminium metal is obviously solid, and boron also forms a crystal that's solid. So, yeah, इसके फिर सारे सारे solids है, but the thing is now these are getting more non-metallic. So, right. पर तुमने ऑक्सीजन का सॉलिड देखा है कभी? You know, solid ऑक्सीजन नहीं ना? So I'm guessing there's like, yeah, धीरे धीरे अपन जा रहे हैं, to liquids and gases. कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड है, ओके। एक सिलिकॉन, हाँ मेटलॉइड है, फाइन। वाज दैट करेक्ट? सिलिकॉन इज मेटलॉइड, राइट? हाँ, राइट ओके। कौन सा ऐसा था जो मुझे लग रहा था कि मेटलॉइड नहीं है? आई डोंट नो। और क्या, टिन, लेड, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट, राइट। हे, लेड सॉफ्ट कहाँ से होता है? लेड इज सॉफ्ट? टिन मैं समझ सकता हूँ, बट टिन भी ऐसे कुछ खास सॉफ्ट तो नहीं दिखता मुझे। तुमने कभी टिन शेड्स को देख के सोचा है कि वो सॉफ्ट है? आई डोंट थिंक सो। लो मेल्टिंग पॉइंट, यस, टिन का काफी लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। इट टर्न्स आउट एल्यूमिनियम का भी मेल्टिंग पॉइंट काफी लो रहता है, क्योंकि उसको इजीली स्मेल्ट कर सकते हैं, राइट? या
मतलब आयरन स्मेल्टिंग करना काफी मुश्किल है, बट ऑन द कंपैरिजन तुम्हारे उसमें एल्यूमिनियम को मेल्ट करना बहुत इजी है एक्चुअली, तो सिर्फ फॉरनेस चाहिए। हाँ, मैंने पूरा यूट्यूब वीडियो से देख देख के सीखा है, सो मेरी एडवाइस मत लो, नहीं तो जाओगे एल्यूमिनियम स्मेल्ट करने खुद। ओके, सो कार्बन नॉट ऑब्वियसली, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटालॉइड एंड टिन लेड सॉफ्ट मेटल्स दो मेल्टिंग पॉइंट। अपन अज्यूम करेंगे सॉफ्ट का मतलब एक्चुअल में humanly soft nahi, metal wise in comparison to actual hard metals. Anyway, CX4 can't act as Lewis acid, but others can because of d orbitals. Right, pretty obvious. ये तो मतलब पहली लाइन काफी obvious, and others can act because of d orbitals, that's also very obvious. तो हर जगह पे होता है, right? या हर ग्रुप में all elements form oxides of form EO or EO2. So, for example, carbon monoxide, carbon dioxide, so on. So, silicon monoxide is unstable. Silicon dioxide, uh, right? I guess वो crystal structure में रहने वाला है. Hey, yeah, of course. So, silicon dioxide is basically quartz. Silicon coordinated with 4 oxygen, oxygen coordinated with 2 silicon. That's SiO2, right? Germanium oxide exceptionally acidic. Okay. Tin oxide amphoteric, lead oxide amphoteric, and SnO2 amphoteric. So tin और lead के oxides amphoteric है. Okay, yes, इसको मैं याद रख सकता हूँ. And carbon के oxides या तो neutral या फिर acidic है. मतलब carbon monoxide neutral, dioxide acidic है. Of course, जितनी तुम्हारी oxidation state बढ़ जाती है उतनी oxide की acidity बढ़ती है. Yeah. Hey, कौन सा carbon? Ah, please. Okay. So with water, carbon, cesium, silicon, and germanium are inert. Tin plus steam gives tin oxide plus H2. Okay. Right. So carbon, uh, yeah, somewhat like iron. You get the thing. सिलिकॉन भी इनर्ट है, जर्मेनियम भी इनर्ट है, तो जो ज्यादा नॉन मेटेलिक के साइड पर थे वो इनर्ट रहते। आई गेस दैट मेक सेंस। जितना नॉन मेटेलिक रहेगा उतना उसको ऑक्साइड फॉर्म करने की एबिलिटी कम है, तो वो उतना कम रिएक्ट करेगा विद H2O, राइट? दैट्स व्हाई अपने कार्बन को हीट करना पड़ता है CO2 फॉर्म करने के लिए. ओके, एंड tin plus steam that gives SnO2 plus H2, right? Just like a metal as usual. And lead is protected by oxide layer. Well, lead नीचे है ना काफी, right? So it's a good metal, I guess. Wait, इनकी आयनोशन एनर्जी का कुछ दिया था, कहाँ पे गया? Right. So lead actually is a really good metal because tin से भी अच्छा metal है, which makes sense क्योंकि tin, you know, उसकी जो, yeah, like tin as such reducing agent actually है, SnCl to use करता है as a reducing agent, as a mild, हाँ, of course. Okay. And that's why also it's more metallic. I know, and तुम बोलोगे कि lead ज़्यादा metallic होना चाहिए because it's more इलेक्ट्रोपॉजिटिव और वॉट एवर, बट सोचो देखो ना, आयन ज्यादा मेटल कैसे लगता है, सोडियम कम लगता है कैसा नहीं, बिकॉज आयन एक्चुअल में कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड इट्स, लेट्स जस्ट से, ज्यादा हार्ड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट, जो अच्छे कोवेलेंट बॉन्ड्स क्रिएट कर सकता है, आई वुड से पार्शियली कोवेलेंट मेटालिक बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, सो उसका क्रिस्टल काफी रिजिड रहता है एंड हार्ड एज वेल, और इसलिए वो ज्यादा मेटल जैसा लगता है, इवन दो सोडियम ज्यादा मेटालिक है और वो लगना चाहिए मेटल जैसा, बट या, ओके,
Okay, cool. So these give tetrahedral halides. So okay, like SiCl4 minus or whatever, or ionic halides. Fine. PbI4 doesn't exist because PB. Hey, ये तुम पैटर्न देखिएगा हर जगह पे ऐसे ही हो रहा है. That with iodine जो लास्ट के एलिमेंट्स है, those don't react, which makes sense. मैंने अपना एक्सप्लेनेशन पूरा दिया. तो ये मैं एज अ पैटर्न देख सकता हूँ, राइट? मे बी हेल्प करेगा. So bond energy is low. Stability of MX2 increases down the group as bond becomes more ionic, and inert pair effect is like this. Okay, wait, मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा. क्या है ये? Stability of MX2 increases down the group as bonds become more ionic. Do bonds become more ionic? Yes, they do. MX2 की stability you are saying. हाँ. Wait, और ये MX4 form करते हैं, right? Yeah, but why MX2 in that? It's like only has 2 electrons. Oh, of course. So MX4 की stability actually में कम हो रही है. That's I guess what we should say. Because right, उतना charge फिर वहाँ पे रखना without actually forming covalent bonds is hard, right? वो oxidation statement को हम completely ionic character नहीं रख सकते हो. So you have to go for covalent bonds. So that makes sense कि MX2 की ज़्यादा favorable रहने वाला है. Because it becomes more ionic, right? An inert pair effect, right? Yeah, okay. So MX, right? Okay. So last 2 electrons, and those are harder to remove as well. I guess that makes sense. मतलब इनकी तुम कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, पहले तुम p ऑर्बिटल से निकालोगे एंड देन तुम s से निकालोगे, बट देन s इज क्लोजर, सो उसको निकालना मुश्किल है. एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट कम्स कि यहाँ से तुम्हें कम ही शील्डिंग मिल रही है, तो इसको निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा, राइट? या राइट. क्या था क्या बोलते उसको, स्लेटर्स रूल, राइट? तो उसमें जो एकदम एकदम इमीडिएट नेक्स्ट ग्रुप रहता है, उसमें या तो 0.3 रहता है, फिर 0.35 रहता है जब ये जबकि जब वो लाइक NS P टाइप का ग्रुप रहने वाला है. जब D टाइप का ग्रुप रहेगा देन इट्स, या एट दैट पॉइंट उससे सिर्फ अपने को 0.3 मिलेगा, सो शील्डिंग लो. दैट्स व्हाई, राइट? Yes, that makes sense. Although Slater's root काफी crude approximations है, but थोड़ा बहुत तो रीजन है, इतना भी बुरा नहीं है. Okay. That's understandable. कहाँ पे गया सब कुछ? So SNX plus X2 gives SNX4, which with X minus gives SNX62 minus. Right, ये तो अपने होते हुए देखा है. SnCl2 जो है, it's a good reducing agent when combined with something like, okay, वो किसी तो भी चीज का chloride is gonna form this thing, right? Gives electron, take chlorine, you know the D. Wait, किसको reduce करने के लिए use करते थे अपन? I don't remember that. हाँ, okay, whatever. कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, और ये तो हो चुका है ना, ये तो हो चुका है. वेट, अपन ये कर तो नहीं चुके पूरा? नहीं, पूरा नहीं, राइट? अपन यहाँ तक पहुंचे थे. PbI4 doesn't exist because PbI bond energy is low. Stability of MX2 increases down the group as bonds become more and more ionic, right? और बोल रहे हैं GeX4 is more stable than GeX2, but PbX4 is less stable than PbX2 stable. Oh, so germanium कहाँ पे आता है? Germanium is a, I guess it's a metalloid, right? Of course. So सिर्फ tin और lead के लिए, MX2 जो है, that's actually better. So of course PbX4 is less stable, and then SnX4 less stable रहेगा than SnX2, right? I guess.
So SnS4 with H2O easily gives S. Oh, ये silicon है, so it's Sn. So SiX4 with H2. It's gonna give us SiX3OH. Okay, fine, whatever. हाँ, तो एक रिडक्शन स्टेप दिखाई मैंने सिर्फ यहाँ पे, सॉरी एक हाइड्रोलिसिस स्टेप दिखाया मैंने यहाँ पे, और क्या 4H2 के साथ में ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबल। विद ऑफ कोर्स यहाँ पे H प्लस, सो हाँ राइट। आई गेस मे बी ये जो है ये भी पार्शियली सॉल्युबल होगा, बिकॉज once we have an H plus concentration इसको और right SiX4 का और forming SiOH4 OH4 is harder because H plus जनरेट होता है, right? So till some point ये hydrolysis होगा, उसके बाद में I guess equilibrium, I don't know, but last time तो ऐसा ही हुआ था ना, yeah, कौन से इसमें हुआ था? I think it was with boron, right? Yeah, POH thrice. So वो precipitate करता है whenever H plus concentration is high. या फिर बोला चाहिए कि उसका precipitate soluble हो जाता है जब H plus concentration low रहती है, नहीं भी। Right, ये rule. Only second period elements can form p-pi bonds easily, right? p-pi bonds, not all pi. Okay, right. Right, okay, that makes sense. Hey, तो सिलिकॉन में d orbitals है क्या? Where did that go? Right, इसमें d orbitals नहीं है. Look, it's neon over here, and neon doesn't have d orbitals. So right, that makes perfect sense कि ये p-pi d-pi form नहीं कर सकते, and at the same time p-pi d-pi नहीं form कर सकते, because right, this rule is not always followed but works most of the times. हाँ, chemistry में सारे rules ऐसे ही है in fact, unless की वर्ड्स में definition wise जैसा दिखाया हो, so then that's not a rule, it's a definition, so whatever. Carbon can catenate more easily compared to others. Carbon is much more than silicon, much more than germanium, which is approximately 10. Catenation ability, right? Yeah. इससे अजीब नहीं है, because nitrogen cannot actually catenate that easily. Instead phosphorus can. तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, right? यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कार्बन ज्यादा अच्छी तरह से catenate कर पाएगा. I guess maybe it has to do with geometry of the thing, because ये sp2 form कर सकता है, and then maybe ये but tetrahedral structures ज्यादा stable नहीं है, like diamond ज्यादा stable रहता है. What about silicon? Silicon की lattice ले लो तुम. Is it not stable? It is, right? Well, whatever. Okay, और क्या है? Allotropes of carbon, diamond crystal is not a Bravais lattice. Okay, ZnS है, but carbon है instead of zinc and sulfide. It's the hardest. Wow, what a fact. Right. Graphite made of aromatic layers attached to each other by the interaction of pi bonds. ये तो पूरा आपने को पता ही है, no big deal. हाँ, ये ना यार, dry lubricants, right? Okay. Okay, so it's a good conductor of electricity across the layers, not. Wait, I think along था कि across? Whatever, कोई तो भी एक तरह से वो अच्छा कंडक्टर है, एक तरह से नहीं है. So I'm guessing कि जब तुम right, yeah, along the layers and across the layers it's a bad conductor, right? Across यानी कि तुम एक लेयर के टॉप से बॉटम पे जाते हो, and राइट, तो मैं कैसे इमेजिन कर रहा हूँ कि बहुत सारे लेयर्स है, वो अप टू डाउन स्टैक्ड है. यहाँ पे एक लेयर, फिर उसके बाद में एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर. तुम ऐसे जा रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि तुम ऐसे जा नहीं सकते हो, इट्स नॉट वेरी कंडक्टिव लाइक दैट. बट तुम ऐसे जा रहे हो, इट इज वेरी कंडक्टिव, क्योंकि वो डिलोकलाइजेशन एवरीथिंग. So graphite with inert atmosphere and electric arc gives hot carbon vapors.
And then that condensation gives C60, C70, which are fullerenes. Okay. Harsh temperatures, beautiful results. Huh? Total 6 membered rings 20, 5 membered rings 12. तो ये सिर्फ C60 के बारे में. C70 we don't know. राइट, इसका मुझे पूरा स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा क्या? पीछे कुछ हो जाएगा नहीं तो. राइट, इतना भी सेशन टाइम है. यानी इसका फ्रंट हाफ ऐसा है. सो अंदर से सेंटर में पेंटागन, फिर पांचों साइड पे हेक्सागन, फिर उनके क्रॉस एरियाज में पेंटागन्स, और फिर फाइनली बचे हुए साइड्स में हेक्सागन्स. राइट, एंड नोटिस कि ये सराउंडिंग में 5 रहने वाले. 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 5 है. एग्जैक्टली. सो कितने लेयर्स है? 4. मतलब इस पहले हाफ में ये पहली चीज. राइट, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप. क्या? हाँ, ये मैं कर दूंगा. 600 ड्रिंक्स कितने हैं मैं कर दूंगा. सिलिकॉन कंपाउंड्स. Each oxygen atom is attached to 2 silicon atoms and each silicon atom to 4. हाँ, अपन जानते हैं ये मैंने मुझे पता है. It exists in a lot of different crystal structures like quartz, crystallite and tridymite. उनमें से एक कोई तो भी ग्लास है, by the way. Right. Amorphous SiO2 is glass. Right. So crystalline structures नहीं है glass. Instead, amorphous SiO2 glass. Right. Right. Of course. Yeah. जब लोग बोलते हैं ना glass is an amorphous substance. कितना है? ये तो obvious था. Generally inert even at high temperatures. अपन देख चुके हैं ऐसा क्यों है. Silicon by itself is very inert. और right at high temperatures. Wait, inert in what sense? तुम कौन सी रिएक्शन करवा रहे हो उससे? Okay, you mean these reactions. ये तो क्या है? तुमने sodium glass create हो, soda glass, right? Yeah. हाँ, ये चीज है बहुत स्टीम बॉल्स वीडियो पर. राइट. ओके. Silicates. Orthosilicate SiO4 4 minus. That's this guy. Pyrosilicate or disilicate or diorthosilicate. That is this guy. And then metasilicate. It's like this. तो सारे तुम देख रहे हो ना, it's just कि ये जो स्ट्रक्चर है उसको तुम रिपीट कर रहे हो. एंड ऑक्सीजन जो है उसको एज लिंक्स मानो कि तुम दो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके एक ऑक्सीजन रख देते हो. इट्स स्टिल वैलिड. मतलब ऐसा हो सकता है. ऑफ कोर्स इट्स प्रीटी इजी. तुम जस्ट एक काम करो ना, या हर जगह पे जो नेगेटिव है, इंस्टेड ऑफ देम जस्ट टेक एच एवरीवेयर. और अब दो यू नो दो ऑर्थोसिलिकेट प्लस हाइड्रोजन वाले जो स्ट्रक्चर्स उनको कंबाइन यूज करो. क्या रिएक्शन मैकेनिज्म होगा? पहले ऑक्सीजन डोनेट करेगा इसमें, बिकॉज इट्स अ गुड लुईस एसिड आई गेस. मतलब कर सकता है, राइट? इट कैन डू कोऑर्डिनेशन. फिर वो हो गया, ये H प्लस किसी पे जंप कर देगा एंड देन इट्स गोना किक ऑफ दिस गाय. राइट? ऑफ कोर्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी. राइट, तो एक H ऑलरेडी यहाँ पे था ना नेगेटिव चार्ज जगह पे, तो इट्स एक्चुअली H2O जो अपन किक आउट कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई पायरोसिलिकेट, क्योंकि हीट करने से एक क्रिएट हो जाएगा. सो ऑर्थोसिलिसिक एसिड, राइट, उसको हीट करो, विल गेट समवॉट समथिंग लाइक दैट. फिर तुम्हें उसको NaOH से तुम्हें हीट करना पड़ेगा, then you can actually get प्रॉपर इक्विवेलेंट जो रहेगा NaOH, उसके साथ में हीट करो तो सारे जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको निकाल सकते हो. मेटासिलिकेट. ओके.
With copper. Why? What's copper got to do with it? for इसको ऑक्सीडाइज करना है राइट. नहीं बट कॉपर का सिर्फ रोल क्या है? हाँ ओके कॉपर इज अ कैटलिस्ट यू नो वो जो सरफेस है फाइन फाइन दैट मेक्स सेंस and then H2O. Right, and then just polymerization, of course. So let's take a memory test. मैं पूरा बताता हूँ कैसे समझना चाहिए. सिलिकॉन्स जो है उनका स्ट्रक्चर रहता है यू नो SiR2 जो यूनिट्स है उनको ऑक्सीजन से तुम चेंज कर रहे हो राइट या जनरल फॉर्मूला मुझे एक बार सोचने दो. ऑक्सीजन का 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है सिलिकॉन का विद ऑक्सीजन 2 कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिर सिलिकॉन और ऑक्सीजन के सेम रहने वाले एटम्स एंड राइट ईच सिलिकॉन अपने यू नो R2 है सो SiR2O दैट्स द एम्पिरिकल फॉर्मूला. इसको बनाते कैसे? सो राइट SiCl4 था ना राइट दैट विथ नो वेट आई गेस दैट wasn't the thing just silicon as you know as a crystal tha basically right so silicon I guess it's liquid I don't know right okay just silicon with Rx under catalyst of copper so copper surface basically I still don't get it कि सिलिकॉन एक यू नो सॉलिड रहेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा. ठीक है अज्यूम करो कि होता है ऐसा कुछ ना कुछ तो वो रिएक्ट करने पे फॉर्म करेंगे राइट वो जो यूनिट्स है अपने दोज थिंग्स मतलब या लाइक सिलिकॉन से 2 R ग्रुप्स अटैच्ड थे और 2 X ग्रुप अटैच्ड है बट अपने को उसको पॉलीमराइज करना है सो जस्ट हाइड्रोलाइज द थिंग सो SiR2OH ट्वाइस राइट और फिर पॉलीमराइज कर दो यू विल गेट द थिंग. अब देखता हूँ क्या है. हे एग्जैक्टली राइट ओके इतना तो मुझे याद आ रहा है. परफेक्ट. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट्स हाइड्रोफोबिक इट्स थर्मली स्टेबल chemically stable in normal conditions can withstand high electric field without reacting. Interesting. Hydrophobic. I mean maybe I don't know exactly क्यों ऐसा but ठीक है hydrophobic thermally stable ये चीज thermally stable ओके मतलब इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं तो तुम वाटर क्रिएट नहीं कर सकते हो बट स्टिल ओके व्हाटएवर. Chemically stable in normal conditions fine can withstand high electric field without reacting. Understood. Biodegradable and not toxic to us. So basically the perfect polymer I would say right. Yeah I mean think about it isn't that the perfect polymer. हाइड्रोफोबिक है इट्स थर्मली स्टेबल मोस्ट लाइकली ये एक्सपेंसिव है शायद इसलिए नहीं लोग इसको यूज करते हैं बिकॉज मुझे कहीं दिखा नहीं है सिलिकॉन्स लोग पहनते हुए बट व्हाटएवर मैं इतना कुछ खास स्पेशल एक्सपर्ट हूँ नहीं. ग्रुप 15 हाँ नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक Sb क्या होता है? एंटीमोनी ऑफ कोर्स बिस्मुथ ओके. नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर नॉन-मेटल्स. Arsenic and antimony are metalloids, and bismuth is a metal. हाँ ये तो obvious है ज़्यादा oxidation state रहने वाला है it's gonna be more acidic. सिर्फ Br2O3 बेसिक है otherwise बाकी सब कुछ ज़्यादा एसिडिक है फिर एम्फोटेरिक है. So I would expect कि E2O5 इन सब के एसिडिक होंगे except Br2O3 जो कि पता नहीं. Okay Br2O5 right yes. Wait I guess वो फॉर्म भी नहीं होगा पहली बात because
एज यूजुअल ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट यानी कि ज्यादा चार्ज, मतलब कि ज्यादा कोवैलेंट कंपाउंड चाहिए अपने को, बट इट्स अ मेटल, सो दैट्स हार्ड, इट्स हार्ड फॉर इट. And the thing is, right. So, uh, कि सोडियम और सॉरी सोडियम क्यों यहाँ पे नाइट्रोजन चाहिए, सॉरी, हाँ इट्स रॉन्ग, यहाँ पे नाइट्रोजन चाहिए. Na2O3 नहीं यार, N2O3 मैंने गलती से लिख दिया होगा. एनीवे, N2O3 and P2, so नाइट्रोजन और फॉस्फरस जो है those don't have d orbitals shielding the s electrons, बट उसके बाद की जो है उनके पास में है डी ऑर्बिटल्स shielding s electrons. सो मे बी उस वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता होगा, ऐसे ड्रास्टिकली चेंज एसिड का डायरेक्टली एपोटेरिक हो गया. या एंड देन यहाँ पे शायद से f ऑर्बिटल्स आ गए होंगे. ओके वो तो या ओके बिस्मुथ में f ऑर्बिटल्स है, दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. यहाँ से जो जंप है जाने से उसमें राइट डायरेक्टली यहाँ पे क्यों मेटल आया, व्हाई नॉट मेटलॉइड्स फॉर मोर टाइम. So f electrons, right? Shielding come explains everything. Wait, later the school में मैंने कभी f सबशेल के बारे में, f ग्रुप जो रहेगा उसके बारे में देखा नहीं, so I don't know. So NX5 can't form, it's no d orbitals. PX5 can form, अपन ने कई बार यूज भी किया है, यूज तो नहीं किया बट देखा है. मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? वैसे मैंने पढ़ा है, काश मैंने एक्चुअली में देखा होता. उतनी लग्जरी किसके पास में. Right, that's pretty obvious. These are the covalent relationship, of course. ये कौन सा गाना है इतना सेंटिमेंट, तो प्लीज दे दो. I don't know. Anyway, down the road, basic character decreases, EH bond energy decreases. Basic character, okay. I mean that makes perfect sense. क्यों होना चाहिए? Right, hydrides है ना ये, so down the group वो ज़्यादा H negative और negative हो जाएगा. And wait, something's wrong. Down the group basic character increase होना चाहिए. Why does it decrease? Because the Lewis. Okay. These are right. These are actually not like right. These are Lewis bases, not Bronsted bases, right? Exactly. So NH3 for example, उसमें अपने को NH2 plus और H minus कभी नहीं मिलता, right? It's just जो lone pair है, that's the thing that does all the work. That's what's causing the basic character, right? Similarly, तुम्हारे पास में कोई दूसरा वाला कंपाउंड आ गया, फॉर एग्जाम्पल पास में BiH3 आ गया, then I guess it's not acting as BiH2 plus and H minus. Instead वो lone pair use कर रहा है, right? Well, whatever. But क्या H minus अगर use करे तो that's wrong or something? I don't know. कि वो भी बेसिक कैरेक्टर के इसमें अपन गिन सकते हैं. हाँ लेकिन वो करने के लिए काफी मतलब एनर्जी लगेगी. H minus, right? Yeah. H minus unstable रहता है as an intermediate. That explains it. Okay. Reducing ability increases as explained previously. H minus easily form होगा because more ionic character. EH bond energy decreases. Very correct. Easier to form H minus, as I said. Actually, I don't think it. Yeah, right. Bond energy. हाँ, okay, that's not the complete reason because अपन जैसे तोड़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना. अगर अपन E radical plus H radical में तोड़े, then yeah, that explains
तो तब ये एक्सप्लेन करेगा कि एक्चुअल में क्यों अच्छा रिड्यूसिंग है। बट अपन किसी बोल रहे हैं, अपन बोल रहे बी प्लस एंड एक्स बी सॉरी ई प्लस एंड एच माइनस के इसमें। सो फॉर दैट टू हैपन, राइट, ज्यादा पोलराइज हो चाहिए, दैट्स द ओनली रीजन। उसमें ई एच बॉन्ड्स का उतना इफेक्ट नहीं रहेगा, मतलब कम रहेगा, जो रेडिकल में ब्रेक करने में है उससे। Ammonia exhibits H bonding, so it has highest melting point and boiling point into 15. Okay. सॉरी, शॉर्ट था। मैं सोच रहा था कि पॉलिंग स्केल पे कैसे अपन एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यूज कर, राइट, एक्सप्रेस करते हैं। बट तुम लोग बोल रहे हो कि जब अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। शुडंट बी अपोजिट। मैं सोच रहा हूँ कि क्या हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज में, राइट, उसका एग्जैक्टली डिफरेंस डिफरेंस पता है अपने को, बट एनर्जी वाइज क्या फर्क पड़ रहा है। Well, whatever, मैं बात छोड़ो। First of all, we have to focus on this thing. Ammonia exhibits H bonding, so it has the highest melting point and boiling point. I guess ये H2O में भी है, I guess, right? So sulfur does not exhibit H bonding as far as I know. तो उसका melting point, boiling point काफी लो है, right? और instead H2O का काफी high है. So that dinitrogen preparation. liquefaction of air, boiling point of, right, मतलब N2 का सबसे बड़ा सोर्स कहाँ पर है? Air. So just use that directly. Boiling point of liquid dinitrogen is 7.2 Kelvin. We don't care. And dioxygen is okay, we actually do care because अपने को separate करना पड़ेगा इन दोनों को. 28% ऑक्सीजन भी रहता है, अपने को उसको निकालना पड़ेगा so that we get pure nitrogen. 17%, 28%, sorry. So it distills out first, right? Liquid air है, right? So इसका lower boiling point है. Wait, what? That with warmth. बट क्या पहले डाइऑक्सीजन नहीं निकालना चाहिए बिकॉज इट्स ऑलरेडी लोअर टेम्परेचर, राइट? मतलब wait, something's not correct. It's forming O2 gas. Wait, कुछ तो गड़बड़ हुई, आई गेस मैंने स्विच कर दिया और समथिंग। लेट मी सर्च, वेट अ सेकेंड। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है नेगेटिव, मुझे केल्विन में दिखाओ यार। Boiling point, right? So it is 77.355 Kelvin, which, yeah, right. That's what we did, right? And of oxygen is supposedly 50 Kelvin. ठीक है, then this is not. I mean, ये कैसे हो रहा है? Then oxygen is distilled. Okay, nitrogen is distilled out first, right? मतलब ये पहले गैस नाइट्रोजन क्रिएट करेगा and then oxygen. Something doesn't feel correct about this. क्या डाइऑक्सीजन पहले नहीं बनना चाहिए गैस? ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सर्च कर रहा हूँ।
केल्विन में दिखा यार, क्या कर रहे हैं? So it's 90.18 Kelvin, not 50. Okay, that explains everything. मैंने गलती से यहाँ पे 50 लिख दिया है. Actually it's 90. मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन को सब कुछ सही लिखा है, एक्सेप्ट मैंने इसमें गलती से 50 कर दिया है. Okay, that does it. Right. So ये हो गया. Right. कहाँ पे थे हम? Let's find crystals out first. Explains it. Okay, lab method. NH4Cl plus NaNO2, that gives N2 plus H2O plus NaCl. Wait, why? It is NaNO2. So, wait, what? Take Na हटाओ, Cl हटाओ, which is NH4NO2 basically. Which, if you think about it, it's like NH3 plus HNO2. So HNO2 can be disproportionated, I guess, right? So you're forming N2 and nothing else. Wait, NO2 का तुमने क्या क्या किया exactly तुमने अभी? Okay, I mean we know that HNO2 is an oxidizing agent and NH3 is somewhat a reducing agent. It's not exactly like that, but चलो ठीक है. It can thought of as a substrate. In substrate, it's a reducing substrate or whatever. तो फिर HNO2 अपन उस पर ड्रॉप कर रहे हैं. What's that gonna form? Oh God, Deltarune के songs. Whatever. Okay, think ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे से एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो पता है नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं है बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है, बट इट डज फॉर्म N2, हाँ, somehow. Right. Think. तुमने एक OH हटाया, let's just say it's radical mechanism. Then nitrogen will grab one of the hydrogens. Okay. तुमने एक और OH हटाया somehow, right? तो तुमने वो डबल बॉन्ड ब्रेक किया, तुमने एक हाइड्रोजन निकाल तुमने OH हटा दिया, and then it can actually combine with nitrogens. So once नाइट्रोजन दोनों अटैच हो चुके हैं, then it's easy to see कि क्या होने वाला है. आगे बस तुम्हें और हाइड्रोजन हटाने हैं, ऑक्सीजन हटाने हैं, and then form those double bonds, and you will get this thing. Makes sense. Okay. NH4 twice Cr2O7. Heating that forms H2O plus Cr2O3 plus N2. Wait, isn't that a popular thing? Wait. मैं सर्च कर रहा हूँ. NH4 twice Cr2O7 में I think it was popular. अमोनियम टैबलेट. वाह क्या नाम. अरे यार इसका मुझे जेनरिक नेम क्या है मुझे वो बताओ. ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स. आई डोंट वांट दैट. आई कैन सी पॉपुलर की तो मेरी रिएक्शन भी थी. व्हाट वाज इट कॉल्ड? समथिंग रिलेटेड टू volcano. Wait, vinegar क्या है? Wait, this can't be vinegar. No, vinegar is not. It's an organic acid, not this thing. But it's used somewhere, right? Or whatever. Guess that's all we need to know. अगर मैंने लिखा नहीं था तब किताब कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग रहा नहीं होगा. ठीक है. Oh shit, charging. What do we do now? Wait, just wait a sec. Wait a second. It's not nice.
let's wait one more second. It's almost done. Ah, यार ये फायर है. यार मैं सोचा नहीं था चार्जिंग बंद करके क्या करूँ. अब ठीक है. Now we got the charging. Good. That should do it. चलो continue. I mean मैं डेस्क पर भी अच्छा सा करा but whatever. Guess मेरे बेड पर ही बेटर है. Right. So कहाँ पर थे हम? ये एक्स्ट्रा की चीज ही क्या? Wait, what's this thing? ये क्या है? Whatever. Okay. हाँ ये स्टिल अभी भी है यहाँ पे. ये एक्स्ट्रा जो बोल्ड हो गया जो भी है. Let's continue, you know. चलो इसे मेमोराइज करना पड़ेगा. Okay. पहली रिएक्शन क्या है? H4Cl plus NaNO2 gives N2 plus H2O plus NaCl. H2 NaCl important नहीं है. N2 is what's important. So basically NH4Cl plus, I mean it's almost as if just NH4NO2 की बात कर रहे हो. So NH4NO2 decomposes to N2. That's important. NH4NO2 decomposes to N2. NH4NO2 decomposes to N2. Okay. और दूसरी रिएक्शन क्या है? NH4 twice Cr2O7 decomposes to Cr2O3 and N2. और तीसरी रिएक्शन है BaN3 twice. So N3 यार उसका नाम क्या था? भूल गया इसका. Whatever. सिर्फ जिसका स्ट्रक्चर याद है और कुछ भी नहीं. But fine. So BaN3 twice, right? That forms Ba plus 3N twice. Okay. Barium. Wait, where does that fit? Barium 56th है ना? And wait, कौन से ग्रुप का है barium? I guess it's the second group, right? Yeah, makes sense. Makes sense, you know. Sure does make sense. Fine. Okay. चलो let's memorize. और मैं बिना लिखे बोलने वाला हूँ. So first reaction थी NH4NO2, right? Or was it NO3? No, NO2. NO3 क्या? इतना महंगी चीज कहाँ से? Okay, NH4NO2 heating that gives N2, and जो बाकी सब है वो important नहीं है. All I wanted said it gives N2. बाकी सिर्फ NaCl and H2O रहने वाला है इसमें. NaCl तो वहां से आता है वो जो yeah, right. So just forms H2O plus N2 basically. That's all you need to know. और क्या? NH4 twice Cr2O7 or 3? I think Cr2O3. Wait, no, we have to oxidize the thing. Cr2O7. So heating that is gonna give us Cr2O3 and N2. Is that correct? And of course BaN3 twice. That gives us Ba plus N2. Right? तो वो N2 काफी प्योर रहता है. Okay, second reaction correct है कि नहीं है? So yeah, Cr2O7, of course. Then that forms Cr2O3 plus N2. Sure, I remember that. Properties nitrogen gas की तुम्हारी हवा ही देख लो ना आजू बाजू की. So it's colorless, odorless, tasteless gas with low solubility in water, right? And it's very stable, of course. अगर अपना एटमॉस्फेयर स्टेबल नहीं होता तो हो गया होता अभी तक स्टेबल, राइट? रिएक्ट कर करके.
but it is stable, except of course बहुत ही अलग मतलब ऐसे situations में जब वो stable नहीं रहता है. Well, whatever. Reactions N2 plus O2 forms NO at high temperature. Isn't this thing a pollutant? I don't know. N2 plus O2. It forms nitrous oxide. Metal plus N2 gives nitride. Wait, nitrous oxide अलग है ना? I don't know. This is nitrogen monoxide. इस हवा को हीट करने से तुम्हें NO मिल जाता है. Interesting. And metal plus N2 gives nitride. So yeah, कुछ metals नहीं देते हैं. राइट, क्योंकि हवा के साथ में डायरेक्टली वैसे रिएक्ट नहीं करते, जस्ट फॉर्म्स ऑक्साइड. तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, कुछ मेटल्स नाइट्राइट ही फॉर्म करते हैं. व्हाटएवर, व्हिच मेक्स सेंस क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना ऑक्सीजन से. सो या और क्या है, अमोनिया. सो प्रिपरेशन, हेबर्स प्रोसेस. राइट. एंड बाय द वे इसका पूरा मेरे पास में हाँ बाद में है ये सब करने वाले पर. सो फर्स्ट हेबर्स प्रोसेस एंड H2 गिव्स NH3. बेसिक आइडिया उतना ही. और क्या है ये चीज, या दिस थिंग. एंड सो H2N and NH2. वेट, यूरिया क्या था बाय द वे? ग्लाइसिन यानी कि नहीं कुछ तो मैं मिक्स कर रहा हूँ. व्हाट वाज यूरिया? दिस इज यूरिया राइट? वेट, लेट मी सर्च. Yeah, this is urea, of course. So urea plus H2O gives NH4 plus twice CO3 2 minus. Makes sense, of course. Just SNAC, right? Boom, boom. निकल जाएगा ये. Yeah. And that forms, right? Okay, CO3 twice minus CO2 plus NH3, right? So heat कर दो, you'll think of the CO2. Oh yeah, and NH3, isn't that a gas? Wait, NH3 is NH3 की प्रॉपर्टीज कहाँ पर है? हाँ ठीक है, अपन बात देखेंगे. हाँ इधर. सो इट्स अ हाईली वाटर सॉल्युबल गैस. दैट्स इंपॉर्टेंट. हाँ, अपन लिक्विड NH3 जब भी यूज करते हैं अपने को ऐसा लगता है कि NH3 हमेशा ही लिक्विड है. इट्स नॉट. इट्स अ गैस एक्चुअली, राइट? या बट वो हाईली वाटर सॉल्युबल है, सो most of the time it's used as a liquid. I mean, a liquid solution or whatever, you know the thing. Ammonium salt and a base that gives ammonia plus salt. Come on, show some class. Okay, ये कुछ important लग रहा है. Right, reactions. Let's memorize. Zinc sulfate plus NH3 gives ZnOH twice. It's a white precipitate in NH3 aqueous basically. And ये right, so it's already basic. Okay, wait, something weird. ZnOH twice, and that's a precipitate. यार मुझे ये देखना चाहिए था कि कौन से हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, बट अब उसके लिए टाइम है नहीं. Whatever. And it basically forms NH4 twice SO4. What is this? 2 minus. Ammonium sulfate. Ammonium sulfate कहीं और भी यूज होता है ना? I mean, I don't remember कि ammonium sulfate किस चीज के लिए यूज होता था, but it was used for some reason. मैं भूल गया हूँ. Whatever. ओके, पर प्रिपेयर कैसे करते हैं इसको? NH3 plus ZnSO4. ओके, चल याद करता हूँ इसको आंखें बंद करके.
ZnSO4, so zinc sulfate plus ammonia gives ammonium sulfate plus zinc hydroxide. ZnOH twice. Yeah, that does it. और क्या है? FeCl gives NH3 that forms this thing, Fe2O3 dot XH2O brown precipitate plus NH4 plus Cl minus. That's weird. Hey, so basically what you're saying is कि मैं NH3 है कि नहीं टेस्ट कर सकता हूँ using just FeCl3, right? I guess. Yeah. So of course NH4 plus Cl minus that's ionic, so वो water में soluble रहेगा. And even if you break it out as NH3 and HCl, NH3 is soluble. So that won't show as a precipitate. All you are saying is add FeCl3 to NH3 वाला solution and you will get a brown precipitate. और अगर मिलता है then it contains NH3. Nice. It's a nice test. So FeCl3 के 3-4 uses है. पहली बात. पहले तो यार like yeah it's used for phenols and alcohols, right? उनको है कि नहीं देखने के लिए. And now it's also used for and also it's used as a Lewis acid a lot actually, right? उसको प्रिपेयर करना इतना हार्ड नहीं, just Cl2 plus Fe. So हाँ, right. और क्या है? Copper 2 plus that gives copper NH3 4 2 plus. It's coordination. Hey, I guess ये जो चीज है that's right. अपने कभी देखा भी था ना इसका क्या? हाँ, come on, जी याद नहीं आ रहा. राइट और इसका अच्छा डीप ब्लू कलर रहता है. आई मीन CuSO4 का तो रहता ही है, इसका भी रहता है. जैसे सारी कॉपर की कंपाउंड्स रहता है ना एक्वस फेज में, दैट इज व्हाटएवर. इसका कुछ भी और भी था ना. हाँ, अभी अपन ने जो राइट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी उसमें ये जो है कॉम्प्लेक्सेशन दैट एक्चुअली मेक्स दिस वेरी स्टेबल. या दैट्स व्हाट वी सॉ, राइट? ऑफ कोर्स मेक्स सेंस. और क्या है? AgCl plus NH3 that gives AgNH3 twice Cl minus. So AgCl is insoluble. Okay. That's weird. Hey, yeah, of course. Like AgNO3 is soluble, AgCl is not. So AgCl insoluble है इसलिए उसको AgNO3 को use करते हैं to precipitate it out. That makes sense. And that's insoluble. But with NH3, yes. And by the way, Ag2O भी insoluble है, but when you use NH3 on it, वो soluble हो जाता है because it forms this complex. So that's worth remembering. And then finally Haber's process का पूरा setup and everything. So H2N2 इनको जगह से आ रहा है, and then compressor, it compresses of course. Then you got a pump, then यहाँ पे catalyst है, and so compressor it's gonna make this more dense of course. इसका pressure increase करेगा, which is probably because अपन चाहते कि reaction fast हो. So इसका अगर pressure increase करोगे then I guess the rate is going to increase. ठीक है, फिर ये react करेगा and then बाहर क्या आ रहा है? So ये high pressure का एरिया पूरा, और बाहर क्या आया? Hot mix of NH3 plus N2 plus H2. Okay. So it has NH3 as well as N2 as well as H2. Of course, पूरी reaction कौन करता है? It just say semi equilibrium whatever. But hot है ये by the way ये mixture, because of course N2 plus H2 is a reaction है, it's probably exothermic. Okay, and then ये होने के बाद में it goes to this that cools it down. So now it's cold mix of NH3 plus N2 plus H2. And then you put that in this liquid NH3, right? यहाँ पे NH3 रह जाएगा. Yes. That's high concentration of H2 and N2. Of course, because NH3 is right. इसका जो temperature है, so because of the cool temperature, NH3 liquid जाता है, of course. और N2 H2 नहीं होते, वो इतने easily नहीं हो सकते. So these just go up. Right. और फिर ये ऊपर जाने के बाद ये वापस, and then you get the thing. And nitric acid के बारे में लिखने वाला तो मुझे लिखा नहीं है.
फिर ये कौन सा गाना है? सोराइडो डेज, और क्या है? नाइट्रिक एसिड पे लिखने वाला था, मैं लिखा नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये सही नहीं हुआ। मैं नाइट्रिक एसिड मैं लिखने वाला था ना, या तो मैंने क्यों नहीं लिखा है? क्या मैंने एक्चुअली कहीं और लिखा? कहीं मैंने ओवरराइट तो नहीं कर दिया? मे बी मैंने ओवरराइट कर दिया। ओह शिट, व्हाटएवर, अब जो हो गया सो हो गया। या फिर मैंने कभी लिखा है नहीं इसमें, दैट्स अनदर पॉसिबिलिटी। और नीचे सर्च करो, फिर कुछ नहीं है इसमें। कभी रिसाइकल नहीं होगा। लेट्स गो फॉर द रिसाइकल टू। एंड पता नहीं कहाँ पे होगा। ओके फाइन। ठीक है, जो हो गया तो हो गया। नाइट्रिक एसिड है अपने पास, कुछ भी नहीं है इसमें। वेट, मैं अपने फोन पे चेक करता था, ऐसा इस पे ओवरराइट ना हुआ हो। एंड वेट, कहाँ पे गया पी ब्लॉक? राइट इधर है। तो टाउन, हाँ इसमें भी आई थिंक। राइट, मैंने कभी ऐसे लिखा ही नहीं होगा नाइट्रिक एसिड के बारे में। दैट्स वन पॉसिबिलिटी, तो व्हाटएवर। But whatever. In short, that's done. Now let's go to periodic properties ना। एस ब्लॉक था ना, एस ब्लॉक कहाँ पर है? बाय द वे मैं 3-4 बार रिपीटेशन करने वाला हूँ, ओके? सो तुम लोगों को बोर हो रहा होगा तो निकल जाओ ऐसे। एस ब्लॉक कहाँ पर है? कहाँ पर रख दिया मैंने? इसको मैंने नाम भी नहीं दिया ना, दैट्स मेन प्रॉब्लम। हाँ ये रहा एस ब्लॉक। ओ, इसका नाम कब से बॉन्ड फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एनर्जी पड़ा हुआ है। सो ऑफ कोर्स इसका नाम है, अरे टाइटल मुझे लेना है। राइट, एस ब्लॉक, दैट्स राइट। चलो पढ़ते हैं इसको। हाँ, ये दो फॉर्मूले की जरूरत नहीं अपने को। ये सिर्फ इतना दिखाने लगा कि हाँ मैंने रिसर्च की थोड़ी बहुत इस पे। एंड या नेट भी यही बोल रहा है। वेल वट एवर। थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ था ना, हाँ। The absorption and emission spectrum of S block elements contain a sharp series. This series is due to S to P transition. The same wavelength are strongest flames. हाँ मैंने बोला है सेम स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट आई वुड से इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, जस्ट टू बी right. Okay, this is used as a test for S block elements. So as usual, पहले सिर्फ 1s2 when you got 1s2 2p6, then 1s2 2s2, wait that's helium, oh sorry मैं कुछ और कर रहा हूँ, that's just normal elements, right? पहले helium 2s1, then neon 3s1, you know कुछ इसमें डी ऑर्बिटल्स है, कुछ इसमें नहीं है। सो क्रिप्टॉन में डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं, है यहाँ पे है, आर्गॉन में नहीं है, क्रिप्टॉन में है, ज़ीनॉन में है। यार यहाँ पे एफ ऑर्बिटल भी चाहिए ना अपने को कहीं ना कहीं, नहीं? वॉट एवर। हाँ मैंने कुछ कुछ ओमिट किए, दैट्स व्हाई एफ ऑर्बिटल्स नहीं आए, आई गेस दैट्स व्हाई। वॉट एवर। क्या क्या इसमें, या शुडंट देयर बी एफ ऑर्बिटल्स ओवर हियर? बिकॉज
Guess not, huh? Right. हाँ, एक्सपेक्टेड ट्रेंड मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दैट। हम डायरेक्ट रियल ट्रेंड्स पे जाएंगे। तब मैं बहुत ही नया था इनऑर्गेनिक को, सो आई डिडंट नो कि इनऑर्गेनिक मेमोराइजर के बारे में, और एक्चुअल में इसमें कोई लॉजिक नहीं रहता है। राइट। आई डोंट इवन नो कि इन्फॉर्मेशन एक्चुअली अपडेट कब की लोगों ने, और एक्चुअली में सही है कि नहीं है, वॉट एवर। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो, आई गेस, आई मीन दैट्स इम्पोर्टेंट, राइट? चाहे रियलिटी कैसी भी हो, जो एनसीईआरटी में दिया है वो नहीं यूज करूंगा तो ठीक है। So atomic radius में beryllium is the highest, then there's lithium, then magnesium, then sodium. Oh, sorry, ये highest नहीं, lowest. So barium is lowest, then lithium, right? Which makes sense क्योंकि अपन ऐसे जब जाएंगे तो ये कम हो जाएगा, right? Atomic radius. That's why lithium is more than barium. फिर yeah, like that's right. As expected, वैसे ही trend है इसका पूरा. So that's very awesome. और क्या है? Diagonal relationship. Okay. बोलने को ऐसे डायगोनल रिलेशन, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में सिर्फ वो कोइंसिडेंटली सेम हो रहा है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे नहीं है सेम वैल्यूज, व्हिच मेक सेंस बिकॉज आयनिक एनर्जी, राइट? और ये एकदम अलग अलग ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स के हैं, सो वो तो अलग हो गए यार। ऑक्सीजन पोटेंशियल देख लो कितने अलग अलग है। डेंसिटी देख लो, वो तो ठीक है, वो अलग चीज़ों की वजह से ऐसा हो रहा है। एक्चुअली में डेंसिटी का मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पड़ते हैं, सो यू कांट जस्ट go with radius and mass and crystal structures. You can't just do that. हमें देखना पड़ता है कि एक्चुअल में उनका मेटालिक रेडियस कितना है, वो कितने क्लोज है एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट? एनीवे, एटॉमिक रेडियस सीजियम का फर्स्ट है, आयनिक रेडियस भी सीजियम का फर्स्ट है। और ये सेम जो सीरीज है, बस वही यहाँ पे उन्होंने छाप दिया, एक्सेप्ट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है। सो इसमें लिथियम 8 है, इसमें मैग्नीशियम 9, और इसमें ये उल्टा है, और ये भी उल्टा है। So 10, 8, 6, and then somehow 5. Not 4, but 5, and then 4, whatever. You got 9, 7, 3, 2, 1, जो भी है। Einstein energy कहाँ पर है? Yeah. So as you can see, जो सेकेंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स है उनकी Einstein एनर्जी काफी हाई है, इनफैक्ट जिसका फर्स्ट है, इसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, राइट? सो इसका इनफैक्ट फिफ्थ से ही स्टार्ट होता है, राइट? दैट मीन्स कि ग्रुप्स चेंज करना काफी इफेक्ट, मतलब काफी इफेक्ट पड़ता है उससे, और पीरियड चेंज करने से उतना नहीं पड़ता है, विच इज ऑब्वियस, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5, 7, 8, 9, तो ये अच्छा खासा ट्रेंड में फॉलो हो रहा है, नो बिग डील विद दैट। हाइड्रोजन एनर्जी भी वैसे ही फॉलो हो रही है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, then 6, 7, 8, 9. Hey, this is actually nice. I can remember this thing. Well, whatever. So hydrogen energy increase हो रही है as you go down, right? Sorry, it is decreasing as you go down. Beryllium के से highest है, फिर magnesium, फिर calcium, so and then similarly lithium के highest है, फिर sodium, फिर potassium. Melting point, boiling point अलग cases है, इसमें काफी सारा fluctuation है। 1, 5, 2, 3, 4. Weird, right? And then still ये 6, 7, 8, 9, 10, तो ये still follow कर रहे हैं। यहाँ पे भी, hey, is that from Genshin? Oh yeah, it is.
ये प्लेलिस्ट पूरी रैंडम है, आई डोंट नो इसमें कौन से गाने। ओके, मेल्टिंग पॉइंट 1 5 2 3 4। हाँ, तो ग्रुप 2 is not following trends correctly, but group 1 is 6 7 8 9 10, like that. Similarly, boiling point 5 7 8 9 10, like that. So boiling point or melting point increase, sorry, decrease हो रहा है as we go down, right? And yeah, cesium इसमें 10 10 10 हर जगह 10. So the lowest energy, lowest hydration energy, lowest melting point, lowest boiling point, and lowest melting point मतलब है कि उनके बीच में जो interaction है, uh, that's weak. Cesium atoms के बीच का interaction, makes sense? Oxidation potential. चलो एटलीस्ट यहाँ पे तो कुछ भी ट्रेंड फॉलो है, 10 9 7 6 5, but then somehow you 1 8 4 2 3, right? Weird, right? So at least yeah, right, the second two elements है, those are following some trend in oxidation potential. So इसका highest potential है and then इसका lowest है, which makes sense, right? Yeah, because this wants to be oxidized, इसको अपने electrons दे देते हैं really hard. And barium को नहीं देने होते hardly. Oh, this is very good. Okay, मुझे लगा इनका कंपेरेबल होगा, ऑफ कोर्स ग्रुप चेंज हुआ तो डिफरेंस बहुत सारा। डेंसिटी या और अपन एक्चुअल और बैलेंस देखते हैं। सो एनर्जी एंथैल्पीज एज यू कैन सी इसमें इतना कुछ खास डिफरेंस है नहीं, मतलब या लाइक सारे हंड्रेड्स की वैल्यूज में है। ओके ओके, हाँ ये सब कौन देखने वाला है, इसकी रैंकिंग देखो सिर्फ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस, या यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस अनलेस कुछ भी बहुत ही एकदम एक्सेप्शनली अलग हो गया हो, पर व्हाटएवर। कंक्लूजन क्या आपने? atomic radius, ionic radius, first energy and hydrogen energy follow the expected trends. Mg has unexpectedly low melting point. Density of alkali metals increase down the group except sodium to potassium and increase from group 1 to 2. Alkali earth metals don't have a trend at all. Wait, ये ऐसा कैसे हो गया? इसमें ये एक्स्ट्रा लाइन कैसे हर जगह पे हुआ है क्या ये? Hopefully now. Whatever. हाँ, ये एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे? ये ऐसे शिफ्ट क्यों हो गया? I don't know. राइट, सारे जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स सबका 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 बीसीसी है, एंड ग्रुप 2 का या तो एचसीपी है या फिर एफसीसी है, एक्सेप्ट बेरियम का बीसीसी है। द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एचसीपी एंड एफसीसी इज द सेम। सो क्यों हो रहा है ये? थिंग इज कि या मतलब जो हार्ड आई मीन लाइक जो हार्ड स्फीयर मॉडल है वो सिर्फ तभी काम करता है जब एक्चुअल में यू नो वो टच नहीं करना चाहते हैं दोज एटम्स। बट जैसे अपन ग्रुप में आगे बढ़ मतलब अक्रॉस द राइट पीरियड में अपन जैसे राइट में जा रहे हैं, ये हार्ड स्फीयर मॉडल फेल होने लगता है बिकॉज कोवेलेंट बॉन्डिंग, राइट, ओवरलैप, तो वो स्पेस कम लेते हैं, बिकम मोर डेंस और समथिंग, आई डोंट नो। Right, and not for metallic ones, especially not ones with variable valencies. Right. So group 1, less than 1 gram per cc, so they float on water while reacting at the same time. Oxidation potential, which is a measure of reductive power, is the highest for lithium.
It doesn't follow a pattern as it depends on too many factors. Okay. Boiling point also follows same trend as melting point. That's not important. I mean, of course, उनका आप boil करने वाले हो metals को. So, हाँ. Okay, reactions. Wait, I think first of all I should memorize some stuff. So, yeah, let's memorize ये rank list. जो अपने को मिली है मैंने create की basically. Okay, atomic radius. So बेरिलियम मैग्नीशियम राइट. तो कौन से जो है ऐसे है जो कि ट्रेंड में एक्चुअली बैठ रहे हैं then just go down the period कौन से बैठ रहे हैं. Atomic radius yes, ionic radius yes, hydrogen energy yes. No, 1 2 3 4 5 6 5 यहाँ पे नहीं है. 4 6 and then 5 7 8 9 10. Hydrogen energy yes, hydrogen energy yes. Melting point yes. Boiling point unexpectedly yes. तो ये 5 7 8 9 10 ये बैठ रहा है बट 1 6 3 4 राइट ये थोड़ा सा अजीब है अदरवाइज ये बैठ रहा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 10 9 7 6 5 एंड देन राइट ये नहीं बैठ रहा है. So for group 1 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी वेरिएबल दिया है इन लोगों ने एंड ग्रुप 2 के लिए नहीं है उतना वेरिएबल. तो जो अपन परफेक्टली नॉर्मल जैसे बोलते हैं वैसे बोल सकते हैं दोज आर जस्ट एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयनिक एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो ये प्रॉपर्टीज कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 ये प्रॉपर्टीज अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं विदाउट या क्वेश्चनिंग आवरसेल्फ. अदरवाइज या लाइक इन दोनों के लिए वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्फ. राइट ओके मैं बता रहा हूँ कौन से प्रॉपर्टीज अपन ट्रेंड में बोल सकते हैं आंख बंद करके. एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स. Sorry. Yeah, that's right. Okay, next. आगे मैंने कुछ रीजंस बहुत ही बीएस दिए बिकॉज तब मेरे पास में एग्जैक्ट मतलब लेट अस से पूरी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, अभी भी नहीं इनफैक्ट, बट तब मुझे वो खत्म करना था इस नोट को. सो या आई हैड टू डू दिस. अगर मैंने थोड़ा कम लिखा होता ना ज़्यादा अच्छा नोट बनता बिकॉज बहुत सारा अपन कट कर पाते. बट तब एकदम मैं उस मोड में था कि यार मुझे प्रॉपरली लिखना है एंड पूरा एक्सप्लेन करना है. मुझे समझा नहीं इनऑर्गेनिक है यार, चलता है अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना, वैसे भी इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती का है. सो या ओके ये तो हो गया. रिएक्शंस. पहला कंबशन बर्न. वेट ये क्या हो रहा है राइट. हाँ चलो. सो राइट लिथियम बर्न करते यू गेट रेड फ्लेम्स. लैम्डा मैक्स जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला लैम्डा है दैट हैज 670.8 वैल्यू नैनोमीटर्स. बट अपने को रिएक्शन जो है वो इसमें देखनी है. So it can form nitride as well as oxide. Sodium that on burning, complete combustion with X of oxygen, then actually forms Na2O2. So, peroxide
है इसमें सोडियम पेरोक्साइड। पोटेशियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। एंड क्या है ये? नेक्स्ट है रुबीडियम। ओके ये नहीं चाहिए मुझे, गो बैक। ओके, रुबीडियम एंड सीजियम नॉर्मल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ओह वेट, अच्छा ये भी सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। दैट सुपर ऑक्साइड, दैट इज सुपर ऑक्साइड। सो अच्छा, नॉर्मल ऑक्साइड्स कौन फॉर्म कर रहा था? ओनली ओनली लिथियम और बोरोनियम। बाकी सब कुछ ना कुछ अजीब फॉर्म कर रहे हैं। ये Na2O2 फॉर्म कर रहा है, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, दैट्स आल्सो सुपर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। ओके, अपन ग्रुप 2 पे जा रहे हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, white flame when burnt in right when powder is burnt, its solid forms protective oxide layer. Okay, so ठीक है ना, ऑक्साइड नाइट्राइड दोनों क्रिएट कर रहे हैं। एंड दिस इज एक्चुअली द सेम थिंग फॉर ऑल ऑफ दीज मेटल्स। सारे जो अपने ग्रुप मेटल्स है वो सब ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों फॉर्म कर रहे हैं, वो कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं फॉर्म कर रहे हैं इसमें, राइट। और कई बार तुम लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, वॉट। सो बस O2 की एमओ डायग्राम बनाओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एंड फिगर इट आउट। सो O2 का ऐसा है, राइट। तुम इसमें एक माइनस डालते हो, यू जस्ट गेट सुपर ऑक्साइड। तो फॉर दैट यू विल हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। O2 2 माइनस मतलब कि पैरोक्साइड, दैट्स डायमैग्नेटिक बिकॉज दोनों, राइट। Yeah, that's how it's supposed to be. Then O2 by itself is paramagnetic as well. Okay. Hang to नहीं है. So reaction with water. Lithium doesn't melt, so less surface area, that is less rate. मेल्टिंग पॉइंट अपन ने देखा था लिथियम का 454 का। हाँ, उनको पता है ना कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो यूजुअल ट्रेंड है वो फॉलो करते हैं, राइट। दैट इज बेसिकली सेइंग कि लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा बड़ा है एंड देन स्लोली मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो सकता है। सोडियम का कम मेल्टिंग पॉइंट है, फिर इसका और कम मेल्टिंग पॉइंट है, सो ऑन। सो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट जस्ट 371 केल्विन है। पोटेशियम का उससे भी कम रहेगा एज यू कैन एक्सपेक्ट। सो सोडियम इट एक्चुअली मेल्ट्स टू द हीट इवॉल्व, और ये मेल्ट नहीं होता इजीली। सो इसका सरफेस एरिया कम रह जाता है, दैट्स व्हाई इसका रेट भी कम रह जाता है। तो ये लाइक इट वोंट एक्सप्लोड, इट विल जस्ट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड स्लोली मेल्ट। बट सोडियम ऑन द अदर हैंड, इवन दो उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बट उसका मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है एंड एवरीथिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली उसका रेट इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट कॉजेस मोर इंक्रीज इन रेट, व्हिच कॉजेस मोर रेट, राइट। यू गेट द आइडिया कि क्या हो रहा है। एंड देन स्लोली, ओके, व्हाट हैपेंस इज कि एक्स का नेट इफेक्ट ऐसा है कि ये ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेता है इन कंपैरिजन टू लिथियम, इवन दो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा रिएक्ट करना चाहिए बिकॉज इसकी हाइड्रोजन एनर्जी काफ़ी बड़ी है। बट या सोडियम रिएक्ट्स faster. And in potassium, well, of course, वो ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा ही। इसका मेल्टिंग पॉइंट और लोअर रहने वाला है, सो इट्स गोना रिएक्ट इवन फास्टर। एंड या जो अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, राइट। सो हाइड्रोजन एनर्जी वी नो कि वो कैसे जा रही है, बट जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इन वाटर, दैट डिपेंड्स ऑन टू मेनी फैक्टर्स। बट अगर अपन वो देखे, कहाँ पे चला गया यार, सो लिथियम के लिए फर्स्ट है, देन सोडियम के लिए 8th है, देन ये इंक्रीज हो गया अचानक से 4, देन 2, देन 3। एंड इवन दो लिथियम का काफी बड़ा है एक्चुअल पोटेंशियल, इट्स नॉट रिएक्टिंग फास्ट, सो उससे कुछ खास एक्सप्लोजिव तो हो नहीं रहा है। बट उसके बाद में यार ये जो है, दीज कैन रिएक्ट फास्ट एज वेल एज दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। सो यू कैन गेस क्या होने वाला है। अगर तुम लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि क्या होने वाला है, बिकॉज कम ऑन यार, ये कितना हैंग हो रहा है, राइट। सो लिथियम सोडियम नॉट सो फैसिनेटिंग। पोटेशियम, आग लग जाती है, जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है वही हीट इतनी जनरेट होने की वजह से वो उस पर आग लग जाती है, एंड देन या यू गेट फ्लेम्स ऑन वाटर, व्हिच इज क्रेजी यार। ठीक है, अभी तक भी ऐसा कुछ खास प्रॉब्लमेटिक नहीं है। रुबीडियम एक्सप्लोजन, राइट। समझ रहे हो ना, जैसे जैसे रेट इंक्रीज हो रहा है प्लस एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, सो वो इट्स मोर लाइक एन एक्सप्लोजिव एट दिस पॉइंट।
जिसको कॉन्टैक्ट पे फट जाता है एंड फिर उसके बाद वेल या राइट नेट हीट इवॉल्व लिथियम की काफ़ी बड़ी है इन कंपैरिजन टू बाकी के जो है क्योंकि उसकी हाइड्रोजन एनर्जी काफ़ी बड़ी है बट उसका रेट कम है सो इट कांट एक्सप्लोड ओके ये तो हो गया और क्या है बेरिलियम मैग्नीशियम नो रिएक्शन बिकॉज ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड PeO layer formation right so okay BeO is an amphoteric oxide and MgO is not it's basic right और वैल्यूम के पहले क्या आता है कुछ भी नहीं वैल्यूम तो पहला है ना ओके so no reaction okay and magnesium also almost no reaction except कि तुम उसको हीट कर दो तो हो सकता है at high temperature magnesium plus H2O forms MgOH twice plus H2 so MgOH twice is basic in nature तो तुम इसको you know क्या डाला है आई गेस फिनॉक्सिलिन डाला आई डोंट नो कैल्शियम प्लस H2O gives CaOH twice इसलिए यहाँ पे ये वाइट चीज हो गई एंड या CaOH twice आई गेस वो प्रेसिपिटेट करता है बिकॉज वेट CaOH twice CaCO3 राइट हाइड्रोक्साइड आई डोंट थिंक इट प्रेसिपिटेट्स दैट इजीली अगर तुम इसमें NaOH डाल दो बहुत सारा देन इट माइट प्रेसिपिटेट हु नोस हो सकता है व्हाटएवर और स्ट्रॉन्टियम हाइड्रोक्साइड अब तो कोई चांस ही नहीं है इसके प्रेसिपिटेट होने का राइट क्योंकि अब तो ये और तो आयोनिक होने वाले हैं एंड दैट्स व्हाई इट वोंट प्रेसिपिटेट एट ऑल MgOH2 शायद से प्रेसिपिटेट करता होगा या राइट MgOH2 is used as an anti-acid and it does precipitate forms a forms some kind of equilibrium और इसलिए yeah it's preferred over NaHCO3 because वो pH को constant रखता है instead of increasing it a lot तो इसलिए MgOH हाँ it does precipitate okay understandable और वो इसमें दिख रहा है क्या नहीं बिकॉज सिर्फ स्टार्ट किया हम लोगों ने रिएक्शन पूरा होने नहीं दिया ना या व्हाटएवर और हीट भी किया है सो once again precipitate नहीं form in that case you have to cool it so that entropically yeah favorable ना हो वो उसका solution what else do you have reaction with ammonia right so alkali metal plus ammonia it's a reducing agent used for alkynes तो उनका ट्रांस हाइड्रोजनेशन करने के लिए और ऑफ कोर्स तुम टर्मिनल अल्काइंस को इसमें नहीं डाल सकते बिकॉज दोस विल जस्ट एसिड बेस रिएक्ट तो हाँ और जो सॉलिड इलेक्ट्रॉन्स है उससे कलर मिलता है बाय द वे और ये तुम्हें कई बार दिखेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स अजीब जगह पे जहाँ पे पहुंचते हैं ना वहां पे तुम्हें कलर मिलता है सो फॉर एग्जांपल जो फार सेल्स रहते हैं राइट मतलब हाउ डू आई से दिस तुम्हारा जो एक एनायन है अगर वो तुम्हारे क्रिस्टल से निकल गया और तुम्हें अगर चार्ज बैलेंस करना है सो बेसिकली वो आयन तो एनायन तुम्हारा निकल गया बट एट आफ्टर सम पॉइंट तुम एनायंस नहीं निकाल पाओगे और बिकॉज पोटेंशियल एंड एवरीथिंग तो वो क्या करेगा वो अपना चार्ज छोड़ के चला जाएगा एंड देन वो जो चार्ज है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे कैविटी में फंसा हुआ है राइट एंड हाँ उससे कलर आ जाता है कहीं से सो राइट दैट्स व्हाई लाइक रॉक सॉल्ट इज येलो और समथिंग आई गेस वही रीजन बोलते हैं ना आई डोंट नो राइट ये तो अपने को पता है हाँ ठीक है हाँ तो अगर ऐसे छोड़ दिया देन इट जस्ट फॉर्म्स NaNH2 प्लस H2 एज ऑलवेज राइट मतलब वो कितने अनस्टेबल स्टेट में वो लेने वो एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है ही नहीं इट इज सॉल्वेटेड व्हिच इज वियर्ड इफ यू आस्क मी प्रोटॉन सॉल्वेटेड इट्स ओके बट इलेक्ट्रॉन सॉल्वेटेड आई डोंट नो अनफेमिलियर हूं मैं इससे
हाँ, typical reducing agent, it's used everywhere. Okay, तो ये अच्छा है, ये अजीब रिएक्शन. So lithium doesn't react with terminal alkynes, huh? Okay, weird. Okay, ये समझ गया. और क्या है? So except beryllium, हर एक और also lithium. So lithium और beryllium दोनों अजीब है. इनफैक्ट सारी जो पीरियड 2 वाले जो एलिमेंट्स है वो सारे अजीब ही रहते हैं, राइट? सो ये दो रिएक्ट नहीं करते लाइक प्रॉपरली, अदरवाइज सारे हाइड्राइड फॉर्म करते हैं. विच मेक सेंस बिकॉज हाइड्राइड फॉर्म करने के लिए इट मस्ट बी वेरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और लिथियम और बेरिलियम नहीं है वैसे. They will instead form covalent compounds, and you know how that goes, right? Okay. ना उनके लिए उसके लिए उन्हें वो क्रिस्टलाइटिस ब्रेक करनी पड़ेगी एंड व्हाट नॉट. छोड़ ही दो. और क्या है? मेटल प्लस आर एक्स gives mx प्लस आर रेडिकल. सो ये वर्ड्स रिएक्शन में यूज होता है. फॉर एग्जांपल तुमने सोडियम प्लस आर सी एल ले लिया, इट्स गोना फॉर्म दिस थिंग. और ये जो दूसरी चीज है, इट्स यूज्ड इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन. सो तुमने मैग्नीशियम प्लस आर एक्स ले लिया, इट्स गोना फॉर्म आर एम जी एक्स. या ओके, इसको इंसर्शन बोलता हूँ मैं कई बार. तो जिंक के साथ में करते हैं कई बार ये. इस बार इसमें बिस्मिल डाइहैलाइड्स है, तुमने जिंक यूज किया, तुम जिंक को इंसर्ट कर सकते हो बिटवीन वन ऑफ दीज. और फिर एक अजीब टाइप के ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू तुम दोनों जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है और जो ZnX वाला ग्रुप है, तुम दोनों के दोनों को निकाल सकते हो. विच मुझे पता उसका मैकेनिज्म क्या है, बट व्हाटएवर. ओह, ये क्या हो गया यहाँ पे? दैट्स नॉट नाइस. मैं इसको वापस लेता हूँ. ओके, दिस दैट शुड डू इट होपफुली. ओके, तो क्या क्या बोल रही है? अल्कली हैलाइड्स आर आयोनिक सॉलिड्स, granted. Lithium halides have slight covalent character and are soluble in organic solvents. Yeah, that makes sense. Right, lithium chloride. Okay, stuff like that makes sense. In fact, yeah, like sodium iodide is also soluble in acetone, right? I mean, from iodine there because that forms really covalent bonds. So that's the reason. I guess lithium iodide better रहेगा यूज करना, because वो ज़्यादा soluble है. I don't know. और क्या है? Beryllium halides are very covalent. They have these structures. Right, that's important. So जो like boron है, right? That also has एक empty shell है उसके पास में, एक empty subshell orbital, sorry. Similarly बेरिलियम के पास में एक नहीं, इनफैक्ट कितने, दो, राइट? या दो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है. सो दो क्लोरीन्स उस पे जा सकते हैं, राइट? हाँ, तो जैसे से टेम्परेचर बढ़ाओगे ये टूटते जाएगा बिकॉज एंट्रोपी. मेक सेंस. Group 2 halides can have order of crystallization in their lattices, but group 1 halides except lithium हर जगह पे कुछ ना कुछ अजीब कर रहा है, राइट? इट्स एज इफ कि वो ग्रुप 1 का है भी नहीं, वो बहुत ही कोवेलेंट है. ओके, कौन सा गाना है? हिप हॉप, हिप शॉप, वेट व्हाट? फर्स्ट फ्रॉम डेल्टा, जो भी है. अच्छा, राइट.
Makes sense. So lithium weirdly enough वो हाइड्रेशन लेता है. हाँ. LiCl.2H2O. ये मुझे याद रखना पड़ेगा. LiCl.2H2O. Right. Wait, beryllium is forming Cl3. उसमें गड़बड़ नहीं लग रही है. BeCl2 बोला and then you have 3 chlorine. Right. यहाँ पे BeCl2 है in fact and then somehow यहाँ पे right एक extra create कर दिया right. Eraser कहाँ पर है? So this is not supposed to be there. Okay. होता है कभी कभी. मैं एकदम बोरॉन क्लोराइड वगैरह पे चला गया. Okay. Group 2 halides can have water crystallization in their lattice, but group 1 halides except lithium don't. So lithium can have 2 water crystallizations. Okay. Alright. So usually the hydrated crystal को तुम heat करते हो, it becomes anhydrated crystal, unhydrated, whatever, और water release हो जाता है. But कभी कभी it can just form hydroxide. So watch out for that. And वो कभी कभी कब होता है? When it is beryllium or magnesium. So मैं guess करते हैं सब क्यों होता होगा. You can form HCl vapors, right? HCl vapors are actually very volatile. वो तो निकल जाएगा अपने आप. It just not happen. That's the whole reason. Of course. So beryllium or magnesium, these are actually slightly more polarizing than lower जो है अपने और metals जो है हमारे. Slightly काफी, in fact beryllium काफी ज़्यादा polarizing रहता है. So what that means is कि वो actually B2 plus से exist नहीं कर रहा है. It has a high covalent nature with its bonds. But जो दूसरे अपने एटम्स है, सॉरी नीचे के जो एलिमेंट्स है, वो एक्चुअल में 2+ स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट, नॉट केयरिंग आउट कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो इसका मतलब है कि वहाँ पे OH माइनस Cl माइनस दोनों रह सकते हैं, एंड देन इट विल नेसेसरली जस्ट हैव Cl माइनस बिकॉज OH माइनस अनस्टेबल है, राइट, इन नॉन बॉन्डेड स्टेट. So that's why वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है. But beryllium or magnesium, they can form covalent bonds, right? And yeah, that's why it can actually hydrolyze the stuff. So cool. और क्या है? कार्बोनेट्स, मीडियोकर एनायन, राइट. जो साइज ऑफ एनायन कंसेप्ट है ना, मैंने पढ़ने की कोशिश की उसको, बट लेट्स जस्ट से कंप्लीटली रीजनेबल नहीं लगा मुझे. मैं उसको कंप्लीटली अवॉइड करूंगा, बट तब वो नोट कंप्लीट करने के लिए मैंने उसको इसमें इंक्लूड किया है. आई वुड से जस्ट डोंट डू दैट, राइट. हाँ, अच्छा है कि तुम उसको करवा रहे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, बट इन इट जस्ट फैक्ट्स. इट्स जस्ट फैक्ट्स कि सल्फेट्स काफी सॉल्युबल है. इट्स अ फैक्ट, राइट. तो उसको कितना भी ट्राई करो ये बताने का कैसा क्यों हो रहा है. इट्स द वे इट इज. So alkali metal carbonates except lithium are stable against thermal decomposition, and alkali earth metal carbonates decompose on heating and stability decreases down the group. So thermal stability, that is. And barium carbonate doesn't exist as solid under normal conditions. It thus kept in an atmosphere of CO2. Right. So stability increases down the group. That's for alkali earth metals, right? Yeah. And I would say something similar happens for alkali metals as well, right? Because Li2CO3, as you can see, it's not stable. On the other hand, Na2CO3 काफी stable है. So yeah. Similarly, Be2CO3 stable नहीं है, right? तो बाकी सारे हैं. MgCO3 है stable. So मैंने Be2 तो नहीं बोला ना. It's BeCO3. So lithium और beryllium हर जगह पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं. Just remember that, right? मतलब lithium chloride has what do we call it? Water crystallization.
Lithium carbonate is not stable, right? Lithium uh, forms very covalent structures. Wait, नहीं, I think बेरिलियम था. Okay, और क्या था लिथियम के बारे में? जो भी है. आई थिंक उन लोगों को ऐसे एक पीरियड वन जो पीरियड टू जो है ना उसको सेपरेट चैप्टर लेना चाहिए था बिकॉज वो इतना अलग है बाकी पीरियड्स से कि या इट्स वर्थ मेंशनिंग कि सारे उसमें डिफरेंसेस कैसे कैसे हैं. बट ठीक है ना उससे मेरा एक काम बढ़ गया होता बिकॉज मुझे फिर वो एक्शन में पढ़ना पड़ता. तो वट एवर. Alkali earth metal carbonates are insoluble and their solubility decreases down the road. Right? वो तो बताया. Insoluble, of course. Right? So MgCO3 insoluble. CaCO3 not so insoluble but it is less soluble than usual. Solubility decrease हो रही है, right? Stability increase हो रही है but solubility decrease हो रही है, right? Yeah. Yeah, right. मतलब for example take BeCO3 वो तो exist नहीं करता है, okay. Okay, right. Wait. What you're saying is that their solubility decreases. Something looks incorrect. But ऐसा ही था ना? Yeah, that was the case. But क्या CaCO3 ज़्यादा stable नहीं है? ज़्यादा soluble नहीं है? Wait, maybe I should search this up. So group 2 carbonates, right? First search message. The carbonates become less soluble down the group. Yeah, okay, this is actually correct. What about hydroxides become more soluble. That makes sense. So of course सिर्फ उतना कि वो आयन बड़ा है लाइक ये अच्छा रीजन नहीं है. बहुत सारे और फैक्टर्स भी है ना रेजोनेंस एंड व्हाट नॉट. Those do matter. But yeah, as you can see कि उनकी stability increase हो रही है, right? Which is a good yeah, good reason for solubility being less because ज़्यादा stable हो रहे हैं GCO3. That means right. और क्या है? Bicarbonates. I seriously think कि पोलराइजेशन बहुत बड़ा इसमें फैक्टर प्ले करता है थर्मल स्टेबिलिटी पे बिकॉज ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है दैट्स यूजुअली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, राइट? तो जिसमें पोलराइजेशन नहीं हो सकता है तो उस केस में ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस से. बट जिसमें हो सकता है दैट या सो बिकॉज ऑफ दैट जो लोअर है उसमें वो जो CO2 ग्रुप है वो उसको रिमूव करने की इच्छा नहीं है because that oxygen का negative charge is still being stabilized by that and that's important for stability. But जो ऊपर वाले हैं for those elements उनके जो carbonates रहेंगे for them वो carbonate वो जो CO2 का वाला part है वो important नहीं है because वैसे ही oxygen पे negative charge है ही नहीं. It's almost covalent, right? In fact वो तो जो मतलब अगर वो उससे रिमूव कर देते हैं then actually it's better because वो रिमूव करने से क्या होगा कि वो जो CO2 है वो फ्री हो गया, राइट? वो स्टेबल हो गया. अभी तो वो यानी दोनों बोर्ड से पैर रख के खड़ा है तो वो सही नहीं है. सॉरी. ओके, बाइकार्बोनेट्स. मैं बस बहुत बोल रहा हूँ इसलिए मुझे खांसी हो रही है और कुछ नहीं. Alkali metal bicarbonates are stable to heat. Lithium bicarbonate doesn't exist as solid. Okay.
हाँ ना, NaHCO3 is stable to heat except of course जब वो Na2CO3 में कन्वर्ट जाता है, राइट. So alkali earth metal है क्या stable? So they don't exist as solids in the first place. And lithium carbonate doesn't exist. Okay. तो में सिर्फ बेसिकली NaHCO3 केस HCO3 उतने ही सब मिलने वाले, और कुछ नहीं है, राइट. तो जो अपने को यूजुअली मिलते हैं वो ही कंपाउंड जैसे सल्फेट्स. राइट, तो सल्फेट्स सॉल्युबल रहते हैं, काफी सॉल्युबल रहते हैं बाय द वे. And sulfates are very soluble in polar solvent. Solubility decreases down the group. Just like CO3, वही सेम रीजन रहेगा इसमें, राइट. या सॉरी CO3 2 माइनस वही सेम रीजन रहेगा. दो तीन रीजन मैं बस बता देता हूँ. रेजोनेंस एक है, एक जो आयन की साइज है वो एक रीजन हो सकता है, राइट. और कोई रीजन मुझे पता नहीं है, सो जस्ट दैट मच. और क्या है, ऑक्साइड्स. Alkaline earth metal oxides, MO, are in NaCl type, that is right. That's kind of important. So alkaline earth metal oxides are like that, but actually जो Na2O वगैरह है, मतलब first group elements जो है उनके oxides जो है, those have anti-chloride structure. That is कि oxygen in fact FCC create कर रहा है, and sodium सारे no, not tetrahedral, it's actually it is tetrahedral. सोडियम सारे tetrahedral voids कवर कर रहा है, राइट. सो वो स्ट्रक्चर वैसा है. एंड ऑफ कोर्स जिंक सल्फाइड वगैरह उस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा. MgO, दैट्स इन NaCl टाइप स्ट्रक्चर. मेक सेंस? नहीं, जिंक सल्फाइड इज नॉट एन NaCl टाइप एट ऑल. MgO इज. ओके. या वो पैरेलल ड्रॉ मत करो. जिंक सल्फाइड इज वेरी डिफरेंट. Sorry for saying that. Okay. Reaction with water. As usual, hydrolysis. जो Ag2 नहीं कर सकता वही सारे करते हैं. They are, yeah, they just hydrolyze easily. As usual. Oh हाँ, so जो super oxides है अपने, so K2O, KO2, RbO2 and whatnot, वो ऑफ कोर्स O2 फॉर्म करते हैं, and H2O2 as well. और ये क्या है, पेरोक्साइड है, राइट. और यूजुअल जो अपने जो Na2O वगैरह रहने वाला है वो तुम्हें पता ही है कैसा है, राइट. Na2O plus H2O just gives NaOH. Very obvious, right. So group 2 hydroxide plus, हाँ पता है आपको, CaO plus H2O gives CaOH twice. Know that. So मुझे ये याद रखना पड़ेगा, पेरोक्साइड से अपने को H2O2 मिलता है, पेरोक्साइड का पेरोक्साइड, बट सुपर ऑक्साइड का पेरोक्साइड प्लस डाइऑक्सीजन. सो ये याद रखना है, पेरोक्साइड से पेरोक्साइड, बट सुपर ऑक्साइड से पेरोक्साइड प्लस O2, पेरोक्साइड प्लस इन दैट रेशियो 1:1, पेरोक्साइड प्लस O2. हाँ, तो इन सब में 1:1 हर जगह पे ना कोएफिशिएंट्स. दैट्स नाइस, राइट. फ्रॉम पेरोक्साइड प्लस O2, होपफुली याद रहेगा. Nitrates, mediocre anion, smaller than CO3, 2 minus. Nitrates become, हाँ ये जो कंसेप्ट है ये रहने दो यार. I don't even say कि वो एक्चुअल में तुम्हें करना चाहिए, राइट. इसकी साइज वगैरह का. Nitrates become more stable against heat down the group. Okay. NO3. Think about it. What about its structure? Nitrogen में positive charge है, एक double bonded oxygen है, दो single bonded oxygen है with negative charges, right? It's NO3 minus. So तो वो जो negative charge है that is doing resonance. That makes sense, sure.
But nitrates are, yeah, which is solubility that actually increases down the road. Right. Probably has to do with hydration energy. Right. Wait, hydration energy, sorry, क्या था वो? Lattice enthalpy, right? Yeah, it's harder to break or something. Thermal stability, more stable. Wait, wait a second. Something, this is not, I think something's going wrong. You're saying they become more stable against heat, right? And you're also saying that nitrates are very soluble and solubility increases down the road. क्यों ज्यादा स्टेबल क्यों हो रहे हैं? मतलब वो तो ठीक है, वो तो कार्बोनेट भी हुए थे ना, राइट? बिकॉज दे बिकम मोर एंड मोर आयोनिक. सो या मतलब वो NO2 को रिमूव करना अब उतना इजी नहीं है बिकॉज इट्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. So that's understandable. But these become more soluble as we go down. Why would that be? उसको सॉल्वेट करने से क्या है? तुम लैटिस को तोड़ रहे हो एट द सेम टाइम. ओह अच्छा, अपन जो तोड़ना बोल, थर्मल स्टेबिलिटी और ये बहुत अलग अलग टाइप के रिएक्शन है इनफैक्ट, राइट? सो दिस इज हैविंग नो पैरेलल विद दिस, राइट? ओके, दैट मेक्स सेंस. तुम एक्चुअली में क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट सेपरेटिंग द कैटायन एंड एनायन, राइट? सो टू सेपरेट दैट, ओके, वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट्स, हाँ, वियर्ड. सिर्फ उनका जो मोड ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग है ना, एक कोवेलेंट है एंड एक आयोनिक है. व्हाट कैन यू इवन से अबाउट द एनर्जी? आई डोंट नो. ठीक है, सेपरेशन के बाद अगला स्टेप क्या आता है? हाइड्रेशन. सो एनायन का हाइड्रेशन तो हर जगह पे सेम है. जो कैटन का हाइड्रेशन है दैट डज मैटर. सो कैटायंस, राइट, जो ऊपर वाले हैं वो दोज गेट हाइड्रेटेड रियल इजीली, ऑफ कोर्स, which would mean कि ऊपर वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि यूजुअली होता है, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, राइट? और ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द रोड. जो छोटे हैं एनायंस उसमें वो इंक्रीज हो रहा है, राइट? नाउ लेट्स सी कि ऐसा क्यों होता है, राइट? मैंने लिखा हुआ है, जिस मुझे वो उस पर इतना विश्वास नहीं, इसलिए तुम लोगों को बताया. Also, the solubility of alkali metal compounds are too high to ठीक है. Solubility of hydroxides increase down the road. Solubility of carbonates and sulfates decrease. हाँ, मैंने इसका रीजन क्या एक्सपेक्ट किया था वो मैं एक बार दिखाता हूँ. ओके, polarizing power of cation and covalent character of compound increases and the solubility decreases. Yeah, that would probably make sense, sure. And that explains कि solubility क्यों decrease हो रही है. Okay. Right. So also for oxygens containing O and blah blah. Okay. हाँ, तो ये मैं अभी तक रीजन यूज कर रहा हूँ. और उसके अलावा कौन सा रीजन था? Big ions solubility decreases. In this case, the product separation are very similar as the contribution due to cations are not. अच्छा, उसके पहले का पढ़ते. Okay. So product separation between anion and cation increases, right? So that is energy as given by bond-Lande equation decreases, making the solid structure easier to break. Right. तो छोटे anions के लिए this happens. Yeah, okay, it makes sense because बड़े anions के लिए polarizing power, right, that causes covalent bonding. But छोटे anions के लिए that's not the case, right?
Okay, that makes sense. So जो फॉर्मूला था अपना वो कैसा है? Born-Lande formula. That's this thing, right? Okay, that's for lattice energy, right? So इसमें R total use कर रहे हैं, where that's the distance between cation का center और anion का center, right? Okay, we don't want that. तो वो चीज जो है that is smaller, नहीं, sorry, that's increasing when you break the lattice, right? तो right, जब एक्चुअल में anion काफी बड़ा रहेगा, then only the radius of the cation right, okay, so R total is approximately equal to the radius of the anion itself, right? So that's actually a constant throughout the period. तो इसका मतलब है कि इनफैक्ट ये वाला फैक्टर सबके लिए सेम है, तो उसको भूल ही जाओ. एंड देन ओनली द हाइड्रोजन एनर्जी इज व्हाट काउंट्स, राइट? सो छोटे एनायंस के लिए हाइड्रोजन एनर्जी भी काउंट करती है, प्लस ये जो एनर्जी है लैटिस एनर्जी, दैट आल्सो काउंट्स, बट फॉर बिगर एनायंस ओनली द लैटिस एनर्जी काउंट्स, सॉरी ओनली द हाइड्रोजन एनर्जी काउंट्स एंड लैटिस एनर्जी डजंट. और ये सब कुछ assumption पर है. इट्स द assumption कि यू नो वो completely ionic bond है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही घटिया assumption है, बट या अगर वो assumption यूज करते हैं then you can predict some stuff at least, right? Other than what we get for smaller ones, right? जो लिथियम वगैरह मिलता है, शायद यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकते हैं, नॉट सो श्योर अबाउट दैट, बट अदरवाइज ये काम करना चाहिए. सो फॉर it should work. Makes sense. So इतना भी घटिया रीजन नहीं है, बट मुझे वो जो दूसरा रीजन था वो ऐड करना पड़ा था इंडिया में, राइट? क्योंकि आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वाला रीजन है, रेजोनेंस. क्योंकि ये चीज ऑक्सो एसिड में क्यों हो रही है पर्टिकुलर, राइट? कहीं और क्यों नहीं हो रही है? और तुम एनायन की बात करते हो, और एक्चुअल जो एनायन पास में रहने वाला है, दैट्स नॉट द होल ऑक्सो एसिड, दैट इज द ऑक्सीजन एटम. तो वो तो हर जगह पे सेम है, स्टिल तुम्हारे पास में अलग अलग चीज हो रही है. व्हाट डज दैट इंडिकेट? रेजोनेंस इज द थिंग दैट्स प्लेइंग द रोल. अच्छा, नीचे जाते हैं. वो बहुत नीचे चले गए. ओके, बस काफी है. हैलाइड्स हो गए थे, बाय कार्बोनेट्स, नॉट बार कार्बोनेट्स. ओके, सल्फेट्स, ऑक्साइड्स, नाइट्रेट्स, और मुझे ये भी मेमोराइज करना चाहिए आई गेस. So LiNO3 heating that forms Li2O, so monoxide with NO2. Okay, MNO3. Shit, I think नाइट्रिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट था. मैंने उसके नोट्स भी क्रिएट किए थे कि कौन सी चीज को कैसे कैसे रिड्यूस, सॉरी कैसे कैसे ऑक्सीडाइज करता है. ओह नो, मैंने वो डिलीट कर दिया, मैंने ओवरराइट कर दिया. ओह नो, ये सही नहीं हुआ. आई शुड हैव केप्ट बोथ और समथिंग, बट मैंने ओवरराइट कर दिया. शिट, मैंने नाइट्रिक एसिड उसमें लिखा हुआ था और मेरे पास में नहीं है. ओके, जस्ट कीप ऑन गोइंग. इन दी एंड में देखूंगा कि में कुछ है क्या रिसाइकल बिन में. So LiNO3 को हीट करोगे जिस फॉर्म Li2O plus NO2. MnO3 को हीट करने से फॉर्म्स MnO2 plus O2. अच्छा, सो सोडियम, ओके, लिथियम को हीट करने पे यू गेट ऑक्साइड, बट जो बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं उनको उनके नाइट्रेट को हीट करने पे व्हाट यू गेट अ नाइट्राइट बेसिकली, राइट? एंड ऑक्सीजन. और क्या है, ग्रुप 2 से अपने को NO2 और O2 दोनों मिल रहा है, एंड फाइनली में MO मिलता है.
ओके, मेक सेंस। हाँ, एक NO3 निकाल दिया, एक NO3 में से NO2 निकाल दिया, गेट ओ NO2 प्लस NO3 बचा आपके पास। NO2 तो बाहर निकाल दिया, NO3 तो दो कंबाइन किए तो NO2 मिला प्लस ऑक्सीजन मिला, वो बाहर निकाला, एंड देन यू गेट दिस थिंग। मेक सेंस। जस्ट क्या बन रहा है, सो इसको आपको MO, अपने को इतना याद रखना है, MO इज द थिंग। ओके, ग्रुप 2 जो है वो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, लिथियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, बट सारे बाकी के जो ग्रुप 1 वाले हैं दोस फॉर्म नाइट्राइट। Important. Nitrates are very soluble and solubility increases down the road. Makes sense. Just like sulfates, right? Yeah. Hydroxides. Ionic crystal when dry and it dissolves in water to produce considerable amount of heat. Okay. So BeOH2 it dissolves in water to produce considerable amount of heat, you are saying. Yeah, sure. Why not? Yeah, this does make sense, huh? Okay. और क्या है? MgOH twice, that is insoluble. Oh yeah, so इसमें कैसे कैसे अलग अलग रिएक्टर है, जब OH माइनस है then it just forms this guy. Okay. हाँ हाँ, और जब H2O है, सॉरी जब H प्लस है just forms this thing. Okay, sure. और क्या आपके पास में? MgOH twice is insoluble. Okay. So we know that CaOH is actually soluble and MgOH is insoluble, right? हाइड्रोक्साइड की राइट उसका solubility, carbonate की solubility कैसी है, that CaCO3 is more insoluble than MgCO3, right? Exactly, right. कार्बोनेट की solubility डिक्रीज होती है, सल्फेट solubility डिक्रीज होती है, बट हाइड्रोक्साइड्स की इंक्रीज होती है, राइट? सो दैट्स व्हाई। और हेलाइड्स अपन ने देखे थे, did we see halides? I don't think we, oh we did. Okay, solubility का कुछ दिया नहीं इसमें, whatever. राइट, नाइट्रस है वैसे तो ठीक है, नाइट्रस हाइड्रोक्साइड्स ठीक है, नहीं कुछ भी दिया नहीं सॉलिड के बारे में, बस इतना ही दिया आपने को। ओके, नो बिग डील। कन्वर्जन चार्ट मत पढ़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गो फॉर दी नाम और सारी चीजें। Thermothermic reduction only works for Mg and beryllium. MgO plus carbon gives Mg plus CO. Other metals of S block are too reactive or have too low boiling points. Right, ज़्यादा reactive metal का example displacement reactions. KF plus CSC2, right? तो ये तो अपन create कर सकते हैं, right? Okay, so form potassium plus carbon plus CF. I don't know इसमें कितना सच है, but some people use this, so whatever. CaF2 understandable, but जो C2 minus था, मतलब कि K2C2, right? वो जो चीज थी, how did that form potassium plus carbon just like that? Why did it not remain as K2C2? No idea. Electrolysis, Towns process, right? NaCl basically gives NaCl liquid,
which after electrolysis gives Na plus Cl2. So हाँ NaCl तो H2O में मत डालना because H2O में फिर Na doesn't actually form. Instead वहाँ पे H2 form होता है, तो वो पूरा पागलपन है, right? और तुम एक्वा सोल्यूशन को आई गेस यूज कर सकते हो इफ यू यूज कास्नर कैलर सेल, तो इसमें एक्वा सोल्यूशन यूज कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग सोडियम अमेलगम. सो अमेलगम का जैसे क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज दैट सोडियम इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग सॉलिड वो लिक्विड या वो अमेलगमेट हो जाता है एंड दैट्स अ बेटर स्टेट, राइट? इट्स मोर स्टेबल, तो इसलिए होता है. एंड लेट मी सर्च इट अप. आई थिंक उसके रीजंस दो तीन थे. सो क्या क्वेश्चन डालूं मैं? सोडियम, ओके वेट, कास्नर केलर सेल, why sodium instead of hydrogen? Stack exchange. 2 मिनट. With mercury electrode as cathode, it takes more negative potential to reduce hydrogen ions to hydrogen gas. Rather, it is easier for sodium ions to get reduced on mercury surface and form an amalgam. Oh, तो इसका एक्चुअली दोनों रीजन है. That yes, हाइड्रोजन का पोटेंशियल इनफैक्ट बढ़ जाता है, सॉरी कम हो जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? और सोडियम का बढ़ जाता है. हाँ, दिस इज वेरी वियर्ड. मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सोडियम अमेलगम फॉर्म हो रहा है, इसलिए लाइक सोडियम का पोटेंशियल बढ़ गया एंड दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग. टर्न्स आउट हाइड्रोजन का भी पोटेंशियल इनफैक्ट कम हो गया, व्हिच नो, मुझे नहीं पता यार ऐसा क्यों हो रहा है. अच्छा अगर अपन Hg नहीं यूज करे कुछ और यूज करे, व्हाट वुड हैपन? व्हाई डज हाइड्रोजन चेंज इट्स पोटेंशियल? I guess it has to do with नैनसेट हाइड्रोजन फॉर्म होता है प्लैटिनम वगैरह में, इसलिए आई डोंट नो, बट दैट्स व्हाट स्टैटिक एक्सचेंज सेज, सो विल गो विद इट कि हाँ भाई हाइड्रोजन का हो रहा है कम, ठीक है. एंड दैट्स ऑल्सो द रीजन जो कि बहुत सारे अलग अलग साइट्स भी देती है, सो हाँ वी हैव टू गो विद इट. बट दोनों अपन टाइप के आर्गुमेंट्स कर सकते हैं कि सोडियम अमेलगम है इसलिए हो रहा है, एट द सेम टाइम Hg है इसलिए हाइड्रोजन नहीं यूज हो रहा है. एनीवे नेक्स्ट. Yes, but the amalgamated metal is actually hard to extract. अब तुम कैसे निकालोगे? अब मिक्स हो चुके हैं, अब तुम निकालोगे कैसे अमेलगम को, राइट? ओके, तो तुम इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हो, just get NaOH. That's something you can definitely do. You'll get really good concentration of NaOH, but that's just it. और हाँ, मर्क्यूरी जो है वो वाटर में डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं होता है, वो इंस्टेड या दोनों मिसिबल नहीं है, वो ऊपर चल जाता है, देन इट फॉर्म्स द ब्लॉब और फिर वो निकाल लेना बाहर. So no big deal. Just get caustic soda right away. But sodium metal, haha, नहीं, तुम नहीं बना सकते. Hg से तो नहीं at least. Bicarbonates and carbonates. Solvay process. NH3 and CO2 that forms NH4 twice CO3. Which once again okay, CO2 it forms NH4 HCO3 in NH3. Okay. Oh god. Ammonium carbonate है. This with NaCl, it precipitates NaHCO3 and forms NH4Cl. Okay, NaHCO3 solid on heating is Na2CO3 solid. Wait, what? This NaCl forms NaHCO3 and NH4Cl.
that precipitates. Wait, why? Why is that precipitating? Usually तो alkali metals के compound काफी soluble रहते हैं. Why is this precipitating in the first place? I don't know. With NH3 it does. No? Okay. And NaH, NHCO3 solid. Okay, once you obtain that, just heat it to get Na2CO3. That's gonna work. Okay. Then you got LeBlanc process. So ये जो पूरी चीज थी first वाली reaction that just depends on this NaHCO3 NH3 that precipitating, right? Yeah. Yeah, of course. So NH4 बाहर निकालो. Just got NCO3 minus plus Ne. In ammonia it's gonna precipitate. Right. Guess that makes sense. Okay. और क्या है? LeBlanc process K2SO4 plus carbon solid plus CaCO3 solid after heating. So I found CaS. Okay. Why? So fine. Okay. Just heating SO4. Is that form SO3 or something? So K2O plus SO3. नहीं? Are sulfides thermally stable or what? देखता हूँ. था नहीं इसमें sulfides के बारे में. Right, okay, these are stable towards heat and access as ionic solids. हाँ. Makes sense, resonance है, क्यों तोड़ोगे तुम? Right? सिर्फ जब तुम resonance तोड़ सकते हो तब तोड़. That's for group 2 and lithium. Only that. So I guess the MgSO4 शायद से, nah, I don't think that's gonna work. तुम देखता उसकी हाइड्रोलिसिस होती है क्या? ये भी अपना जो हमारी थ्योरी करेक्ट हो. MgSO4 hydrolysis now thermolysis. So thermal decomposition. हाँ है यार, सर्चेस लोगों ने किए. So 8 kilojoule per mole or all MgSO4 is decomposed at 998 degrees Celsius. Okay. ठीक है, समझा मैं. Okay. Right, तो हाँ डिकम्पोज होता है. But what does it form? So StackX में लोग बोल रहे हैं that yes, magnesium sulfate can be converted back to magnesium oxide by thermal decomposition or use of reducing agents. Okay. हाँ right, so MgSO4 plus. Hey, I think ये था भी कहीं तो भी MgSO4 plus carbon. तो ठीक है, अपन बात देख लेंगे. So it seems just group 1 के जो लिथियम को छोड़ के एलिमेंट्स है, those are right. उनकी जो ऑक्सो एसिड्स रहने वाले हैं, सॉरी ऑक्सो एसिड कॉन्जुगेट प्लस कैटायन जो चीज है, वो जो चीज रहेगी, those are hard to decompose thermally because resonance. Makes sense. Yeah. So group 2 क्योंकि पोलराइजिंग पावर एक्स्ट्रा है तो वो अपने आप डिकम्पोज हो सकते हैं because no resonance. Lithium पोलराइजिंग पावर एक्स्ट्रा है, can okay, makes sense. हाँ, कहाँ पे था मैं? So मैंने क्या किया, K2SO4 plus carbon plus CaCO3. So K2SO4 अपन डिकम्पोज तो नहीं कर सकते, but what if अपन CaSO4 को डिकम्पोज करें? That is possible, right? So that decomposition just forms CaS. Okay. Wait, CaS and not CaO. Interesting. ऐसा क्यों हुआ exactly? Yeah, it's good.
एंड देन व्हाट K2CO3 तो बेसिकली तुमने आयन एक्सचेंज किए तो पास में K2CO3 आ चुका है CaSO4 का अपन ने कुछ भी कर दिया उसका क्या रिडक्शन आई डोंट नो क्या हुआ इसमें the thing is that K2CO3 is what matters right yeah that's the thing you want to make so K2SO4 से K2CO3 how do you make that through this process कहीं और से कार्बोनेट लाओ you know और कार्बोनेट पे K2 बिठा दो easy as that और या लाइक रिवर्सिबल प्रोसेस रहने वाली है ये आयन एक्सचेंज टाइप की चीज और अब जो कैल्शियम आ चुका है ऑन सल्फेट सो CaSO4 maybe that is somehow destructible with reducing agents carbon basically okay right और क्या है ऑक्साइड्स ये लोफी प्लेलिस्ट नहीं क्या हो कुछ अलग ही टाइप का चल रहा है मुझे लगा था व्हाटएवर NaOH का Na2O that's obvious CaCO3 का CaO plus CO2 obvious so carbonates of group 2 doable carbonates of group 1 not doable hydrogen carbonates of group 1 doable and what else you have MgSO4.7H2O okay oh yeah so if you do heat it right तो अपन ने अभी भी देखा ना कि at high temperatures you can actually heat it to get this right that makes perfect sense बाप रे ये सारे गंदे टाइप के टॉक्सिक कंपाउंड्स कहाँ जा रहे ओके और विथ कार्बन रिडक्शन MgO and CO2 plus SO तो MgO तो ऑलरेडी बन रहा था ना तुमने ये कहा अच्छा ठीक है ना या सो विद आइदर हीट और रिड्यूसिंग एजेंट्स मेक सेंस सो यू नो SO3 को निकालना राइट ओके इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट यू नो उसको ब्रेक करो एट द पॉइंट फिर इजी हो जाएगा राइट हाँ जब SO4 minus 2 minus is a good oxidizing agent just oxidize carbon to CO2 and eventually वो SO2 2 minus हो जाएगा and wait no SO3 2 minus हो जाएगा and maybe that's you know decomposable I don't know हाँ क्योंकि resonance कम होगा ना फिर it makes sense and then what KOH plus O3 forms KO3 oh बस सुपर ऑक्साइड अपन देखा था अब क्या है ये 3 ऑक्सीजन एटम गॉड क्या है ये व्हाट इज दिस हाँ इंटरेस्टिंग पोटेशियम कौन सी अजीब चीजें कर रहा है फॉर्म KO3 प्लस तो KO2 तक होगी तक KO3 भी फॉर्म करता है ये and that is H2O and okay what else potassium plus NH3 liquid plus O2 so you know K plus and electrons in NH3 it forms K2O3 और कैसे कैसे कंपाउंड्स है ये K2O3 हाँ what okay so it's ozone but with 2 potassium अजीब लाइक सोच के देखो ऑक्सीजन बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन और इसके साथ में पोटेशियम पोटेशियम कौन से गाने लग गए लोफी है कि नहीं कुछ और नहीं लग गया हाँ वही लोफी है और एडवर्टाइजमेंट तो ठीक है सेस्क्वायो जो भी है that compound K2O3 very unnatural okay और क्या है zinc plus NaOH it forms Na2ZnO2 plus H2 right what else hydroxides sticking off line CaO
ओह गॉड, ये तो बहुत सारा है. We have to do it. What other choice do we have? ये पता है. और ये क्या क्वेश्चन है? एंडो से तो CaOH twice. That makes sense. इनिशिएट कर रहा है. Of course, it can precipitate. It will precipitate. जहाँ भी precipitation हो रहा है, that's a hint कि यार शायद से वहीं से तुम्हें कुछ ना कुछ करना है, right? So it forms NaOH, aqueous, heat that will form solid, right? हाँ तो by the way NaOH solid भी रहता है, except कि generally NaOH aqueous में ही अपने को मिलता है यूज करने के लिए. But yes, we can also exist as solid. और हाँ ये चीज, so this is obtained from वो जो प्रोसेस थी पूरी, Hg यूज करना इंस्टेड ऑफ प्लेटिनम. यू गेट द थिंग. सो वहां से सोडियम अमेरिका मिल रहा है, देन हाइड्रोलाइज दिस गाय. GCl2.6H2O. राइट, याद है मैग्नीशियम और कैल्शियम दोज हाइड्रोलाइज, दैट्स व्हाई दिस थिंग. व्हाट इज CaC2 plus H2O. हाँ ये तो वेल नोन है यार, दिस इज लाइक रियली वेल नोन. ये कई बार यूज होता है फॉर प्रिपेयरिंग दिस थिंग बेसिकली C2H2. क्या है ये वैसे इथीन और इथाइन? इथाइन, yeah, इथाइन, right. What else do you have? Halides. यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या? ये एक एम्फोटेराइड है विद कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट CO, और यहाँ पे Cl2 आ गया समहाउ. ओह आई सी, तुमने इसको पहले रिड्यूस किया, फॉर्म बेरिल किया एंड देन क्लोरीन, और मे बी सब साइमल्टेनियसली हो गया. नो आइडिया व्हाटएवर हैपेंड, तुम्हें गेम मिल रहा है. I still don't get कि ये F4 वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसको तुम यूज करके ये क्यों बना रहा फिर, राइट? व्हाई दैट? अच्छा ये प्रिपरेशन मेथड है ही नहीं, ये सिर्फ एक नॉर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. So beryllium coordinates easily with maximum coordination number equal to 4. Other group 2 elements have maximum coordination number equal to 6 because of d orbitals. Makes sense, sure. NaCl plus HCl that forms NaCl, right? तो ये जो चीज है it's actually used for preparing NaCl industrially. So HCl vapors use करते हैं, right? Produced in mass and right, तो purify करने के लिए, purify impure NaCl basically. और क्या है CaCO3 plus HX. Let me guess क्या होने वाला है. CaCO3 is not so soluble, and then somehow also CaX2 आ गया. Wait, but that is not so soluble. Oh, क्या है? Okay, तो जब इसको हीट करते हो CO2 is irreversibly removed, right? That's the important thing. Okay. What else? KCl.MgCl2.6H2O. इसका कोई भी नाम भी है ना इसका? I don't remember it. Okay. Heating that forms liquid KCl.MgCl2.6H2O in liquid form. Also, full condition you just get KCl and MgCl2 in different. Okay. Weird. Okay, I get it कि बहुत सारा क्लोरीन है एटमॉस्फेयर में इसलिए रेसिपिएट हो रहा है, but
don't know यार, इसका phase जो है, there's no water over there. What do we do? ठीक है, ये अजीब था. सल्फेट्स, ये बहुत सारे रिएक्शंस नहीं है. I guess yeah. NaCl plus H2SO4 gives Na2SO4 plus HCl. Duh. Seriously. Isn't that so obvious? बाय द वे अगर ये एक्वस फेज में तो ऐसा एक्चुअली हो भी नहीं रहा है बिकॉज ये SO4 माइनस K2 ऐसे ही घूम रहा है. It doesn't even have Na plus with it. वो सिर्फ शो ऑफ के लिए. या इनग्रेडिएंट सारे अलग अलग रहने वाले हैं. और ये भी जस्ट H प्लस और Cl माइनस है. NaNO3 plus H2SO4. Alright. That forms NH. Na तो हटा ही दो. This is just NO3 basically. So it's HNO3 plus HSO4 2 minus. Sorry, HSO4 minus. Right. Okay, that's pretty obvious. तो क्या सल्फेट क्रिएट करने के लिए कोई और सॉल्ट ले लो और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो. That's easy I guess. Right. अच्छा HCl तो तुम रिमूव कर सकते हो ना. Yeah, plus point. I mean, of course, H2SO4 की affinity water के लिए बहुत ज़्यादा है. HCl की भी है, but ज़्यादा नहीं होती. Not like H2SO4. So तुम रिमूव कर सकते हो, I guess. CaCO3 plus H2SO4. CaSO4. CO2. Once again, CO2 का removal, irreversibility, nice. सिर्फ हीट करोगे just form CaO, right? फिर तुम उसको हाइड्रोलाइज कर सकते हो and then it can form CaOH twice. और फिर तुम उसमें H2SO4 मिला सकते हो तो form CaSO4 and CaSO4 we can probably precipitate that. Right, exactly. तुम CaSO4 तो आराम से नहीं बना लोगे. The real problem is to precipitate this thing. और इनफैक्ट H2SO4 डालना ज़्यादा बेटर है. राइट, तो तुम्हारे पास दो पाथवेज है. पहले तुम इसको हीट करो और फिर H2SO4 डालो या फिर तुम इसमें ऑलरेडी H2SO4 डाल के हीट करो. The first path, sorry, the second pathway is easier because H2CO3 form होगा and that's much easier to decompose, right? Than actually COCO3 because you know. Okay, and then CSO4 बन चुका है. So heat it and you will get this crystal CSO4.2H2O solid. Right. I guess इसको तुम gypsum बोलते हो, right? And this is plaster of Paris, and this thing is burnt plaster. इसको heat करने से you get plaster of Paris. So और heat करने से you get burnt plaster. Plaster of Paris में water मिलाते हो, you get gypsum. And gypsum can actually become really hard when it sets properly. So that's why POP ऐसे काम करता है. What else? Na2S plus H2O2. तुम्हें Na2S मिला कहाँ से? इसको प्रिपेयर करना पहली बात, यानी कैसे? I don't know. राइट, ओके. सल्फेट्स तुम तो मतलब थर्मली डिकम्पोज कर नहीं सकते हो. तुम्हें ये कैसे मिला आखिर? नो आइडिया. बट उसको ऑक्सीडाइज करने से यू जस्ट गेट एन. क्यों H2SO4 तुम अल्टरनेटिवली जस्ट SO2 से क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हो? व्हाटएवर, ये है एक बात है तुम्हारा. इज दिस oh so MgSO4, okay, this actually forms MgS and not MgO. Wait, what? But MgO तो फॉर्म होता है ना? Is that not correct? Why MgS? No, we just saw कि MgSO4, you know, it forms MgO, right? So why is this forming MgS in this case? सल्फर पे नेगेटिव चार्ज नहीं है ना, सल्फर Mg से अटैच्ड है. हाउ कैन इट एक्चुअली कंबाइन विद सल्फर? अनलेस तुम सारे ऑक्सीजन निकाल लो. ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है? इट्स नॉट डिकम्पोजिंग लाइक यू नो फॉर्मिंग SO3 एंड नो. यहाँ पे कार्बन वन बाय वन इसके ऑक्सीजन निकालते जा रहा है. दैट्स व्हाई इट्स फॉर्मिंग. ओके, दैट मेक्स सेंस. And in the end सिर्फ सल्फर बचता है, so Mg has to live with that. Makes sense, right? So carbon CS is not easy to form. Instead, CO is easy to form.
you know. Or can Na2SO4 plus C, right? This also forms. So now we know कि सल्फाइड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं. Just take the sulfate and plus a reducing agent. In this case, carbon. And it's gonna form this guy. Wow, that's awesome. But okay, यहाँ से यहाँ और फिर वहाँ से वहाँ. क्या ये दिक्कत? यानी तो बस उल्टा जा रहे हो वैसे. और तो इसमें H2 भी कंज्यूम कर रहे हो, which is awful. Why would you do that? और क्या है? Na2S plus S8. Meaning it forms Na2S. Shit. मैंने ग्रुप 15 किया, ग्रुप 16 के मैंने नोट्स पढ़े, ग्रुप 16 का डिलीट हो गया सब कुछ. Oh no, we have to go to the recycle bin now. क्योंकि oh god, मैंने वो ओवरराइट क्यों किया यार, या पूरा का पूरा डिलीट हो गया इन दैट केस. ये होने के बाद में just go to that and yeah, we won't do the names and everything. So now we know sulfides एक्चुअल में कैसे क्रिएट करते आते हैं. गेंशिन ना मुझे सारे गेंशिन के लग रहे हैं, उनके पियानो तो बहुत सारे. ओके, ये हो गया हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्पररी हार्डनेस, प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, हाउ टू रिमूव बॉइल्ड विद CO2. शिट यार, मुझे अब रहते नहीं आ रहा है. जस्ट हैव टू गो टू द रिसाइकल बिन टू सी कि क्या हुआ. कम ऑन. ओके, रिसाइकल बिन 7 days 30 days. हाँ, मैंने बहुत रिसेंटली किया है ना, सो ओह गॉड, वो रिसाइकल में है ही नहीं. ओह शिट, ओह शिट, वेट अ सेकंड. मेरे मेरे सारे नोट्स चले गए, मैं इतने मेहनत से बनाए थे, और मुझे वीडियो देख देख के करना पड़ेगा. दिस इज नॉट वर्थ इट. ओके, मैं इसको अनडू नहीं कर. ओह गॉड, मैं अनडू भी नहीं कर सकता इसमें. ओह नो यार, ये सही नहीं हुआ. राइट, ग्रुप 16 चला गया along with half of group 15. That is too much, isn't it? God. I can't believe this. ये सही नहीं हुआ. We'll have to watch videos for that in that case. So इसलिए तो मैंने वीडियोस बनाए थे ताकि कुछ हो जाए तो मैं वो देख पाऊँ. जो भी है, let's just continue with कहाँ पे गया अपना S block. Notes. मुझे पूरा वापस लिखना पड़ेगा लगता है बी ब्लॉक का. ठीक है ना, JMN होने के बाद में बस. क्या यार, मैंने पूरा क्रिएट किया था, वो है ही नहीं. मैंने रियलाइज कितना पेनफुल है ये. नॉट एज इफ मैं उसको हमेशा यूज कर रहा था, बट स्टिल वैसे पता नहीं कितने भी दिन करता रहा एंड फाइनली वो पूरा क्रिएट हुआ था और अचानक से उसमें से आधा पार्ट चला गया. हाउ इज दैट जस्टिफाइबल? ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. कहाँ पे थे हम? ऑक्साइड्स हो चुका था, सल्फाइड्स तक आ चुके थे ना अपन. चल आगे चल. सल्फाइड्स, राइट? Sure. So S8, that's how sulfur actually is. Oh God, मैंने सल्फर क्या भी लिखा था, वो भी पूरा चला गया. That's just too much. पूरा का पूरा ग्रुप 16 चला. मैंने हैलोजन्स के बारे में लिखा था शायद से.
नहीं ओके नहीं हाइड्रोजन का मैंने नहीं लिखा था राइट ग्रुप 17 वाज नॉट देयर श्योर ओके फाइन hardness of water temporary hardness presence of insoluble carbonates how to remove boiled release CO2 permanent hardness presence of soluble salts of metals that have insoluble carbonates how to remove add Na2CO3 okay. Right. Of course, matlab, sulfates are not that insoluble, but carbonates are. They are insoluble, right? For group 2, that is. So, sure, we'll do that. Useful chemicals, CaCl2 acetate. Right. क्या था वो CaCl2 डॉट कितने H2O कहीं तो था ना? Okay. अब तो नहीं था. हाँ. It's okay. It's not dot H2. It doesn't have water crystallization. Just I mean, it just reacts with that. But that's CaC2, not CaCl2. I want CaCl2. That's not here. Fine. So it absorbs H2O, but it actually reacts with NH3 and ROH. So we know क्या होता है ना कि CaCO3 like that's sorry calcium right calcium salts those I mean under hydrolysis essentially hydrolyzed. So calcium magnesium के hydrolyze होते हैं otherwise बाकी लोगों के नहीं होते right oxidized by salts. So yeah. And what else? CaO. When heated, emits limelight, which is more white than regular flame. Applied on walls before painting. CaO with H2O gives CaOH twice, which is based. Okay, and it also produces heat. हाँ ये तो अपन ने देखा हुआ है चूना लगाना right this is quicklime तुम इसको H2O mix करते forms this guy this is actually what is used as चूना तो तुम इसको you know मिक्स करते हो वाटर के साथ में तो इसको अप्लाई करते हो दीवार पे फिर ये CO2 यूज करता है एटमॉस्फेयर से एंड इट फॉर्म्स CaCO3 which is limestone which is supposedly hard and white hard to नहीं बोलूँगा because it's yeah okay but it is white right yeah and heating this forms limelight so obviously इसलिए इसको limelight बोलते हैं from lime NaCO3 baking soda heating NaCO3 forms CO2 and Na2O3 sorry Na2CO3 right and Na2CO3 is edible okay and CO2 means ठीक है नहीं तो तक पता है Na2CO3.10H2 washing soda it removes so it provides basic environment for detergents used in glass production okay so okay it's somehow used in glass production that's interesting okay so obvious use of washing है because washing soda but other than that it's also used in glass production very weird okay और क्या है ओ अच्छा ये अलग अलग स्टेटमेंट्स है राइट इसलिए यहाँ पे कैपिटल यू चाहिए था मैं थोड़ा सा इसको अलग टाइप से लिखना चाहिए था सो पहला स्टेटमेंट है प्रोवाइड्स बेसिक एनवायरनमेंट फॉर डिटर्जेंट्स washing soda and second is it is used in glass production so yeah of course soda glass that's why yeah washing soda and glass soda glass yeah this is like Na2CO3 plus SiO2 that forms soda glass right CaSO4 plot H half H2O that's plaster of Paris right okay that forms this guy okay right this thing so Cl2 generally ऐसे प्रोड्यूस करते हैं the aqueous NaCl का hydrolysis of course that forms Cl2 so वो Cl2 अपन यूज करते हैं इस पे to actually get bleaching power
and it sets up reactions just the way H2O2 does, right? No radical reactions. नाम बहुत सारे नाम, पहले तो देख लेते कितने हैं. 34 you have to remember. Of course कुछ कुछ तो काफी easy है, like Na2SO4.10H2O. Okay, that wasn't easy. हाँ, NaOH, that was easy. Caustic soda. Na2SiO3, soda gas. That's easy to remember. But कुछ नहीं. Na2CH2H2O, crystal carbonate, seriously, crystal wow, बढ़िया. ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई और इसमें क्रिस्टल होगा तो नो, सम अदर वाटर क्रिस्टलेशन इसमें हो सकता है तो नहीं. ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं. Na2CO3.NH2O वॉशिंग सोडा, Na2CO3.H2O क्रिस्टल कार्बोनेट, Na2CO3 Na2CO3 सोडा ऐश, NaOH कॉस्टिक सोडा, एंड ओके पहले तो पाँच कर देते हैं. Na2SiO3 सोडा ग्लास. ओके पहले 5 बोल रहा हूँ. Na2CO3.10H2O मैं बिना देखे बोल रहा हूँ. That is washing soda. Na2CO3.H2O not 10H2O, that is crystal carbonate. NaOH is caustic soda. Just Na2CO3 that is soda ash because एक भी water नहीं है उसमें. और Na2SiO3 that is soda glass. Yeah, is that the thing? Of course. फिर है NaNO3 that is Chile saltpetre, और by the way KNO3 is Indian saltpetre, जो भी नाम इसका. और क्या है Na2SO4.10H2O, that's Glauber salt. Okay, Na2B4O7.10H2, that's borax, we know that for sure, sodium borate. Na2B4O7 is called metaborate, although मैं उसको like borax ही बोलूँगा, it's just anhydrous borax. KCl Sylvine, I guess this is the easiest ore to remember. KCl Sylvine. K2CO3 black ash and pearl ash. Okay. और pot ash कहाँ पर है? This is one of the things, right? Okay, वो बाद में मिलेगा आपको कहीं ना कहीं. Yeah, right. It involves K2SO4, I guess. In Al2O3. So K2SO4 would be potash, I guess. Okay. और क्या है? KCl Sylvine, K2CO3 is black ash, pearl ash. हर टाइप की ऐश है यहाँ पे. Na2CO3 is soda ash and K2CO3 is black ash. It's like soda से sodium and pot से potassium. Does that make sense? Okay, CaCO3 limestone. Lime से कुछ भी नहीं, कैल्शियम थोड़ी ना. ठीक है, I don't know कैल्शियम कहाँ से आएगा, no idea. कैल्साइट I don't know यार, क्यों गैस करना अपने को. ठीक है, CaO quicklime, CaCO3 limestone, MgO. एक काम करता यार, देखता नहीं ये नामों को. MgO magnesia, okay. MgO plus MgCl2 mix, I don't know. Magnesia cement और Sorel cement. अब ये इंशन से that I can say without even looking at smartphone. MgO magnesia. चलो ये 15 तक करते हैं अपन. तो मैं बिना देखे बोलूँगा, मतलब बिना नाम देखे, just focus on the compound. So okay, NaNO3 Chile saltpetre, Na2SO4 at NH2O, that's Glauber salt. Okay, I think so. Na2B4O7 dot क्या है 10H2O, right, that's borax. And then KNO3, that's Indian saltpetre. KCl is Sylvine. K2CO3 is black ash or pearl ash, right? Yeah, okay. CaCO3 for limestone. CaO quicklime, MgO magnesia. Wait, sorry, magnesia है ना ये कुछ और नाम है जो भी है. And MgO plus MgCl2, that's magnesia cement or Sorel cement.
या एग्जैक्टली, ले जाएगा, मुझे याद है, इतना बुरा भी नहीं है। बट से अपने को 43 याद रखना यार, ये तो बहुत, या लेट्स जस्ट से ये इतना मेमोराइज करने के बाद में विल टेक अ ब्रेक, बिकॉज क्या पता मेरा गला कब दर्द का शुरू है। ओके 16th, बिना देखे बोल रहा हूँ मैं, MgOH2, अच्छा इसके आगे कुछ दिया हुआ था ना, सस्पेंशन इन H2O, milk of magnesia, that's an antacid of, okay, COOH twice, oh god, I don't remember that, copper hydroxide, नहीं, generic name चाहिए अपने को, suspension, that's milk of lime, oh it's Ca, sorry, not Cu, Ca, so COH2 aqueous, that's lime water, COH2 suspension, that's milk of lime, and CaOH2 powder, that's lake lime, of course. CaSO4 और 2H2O, that's gypsum, ये तो आपको पता है, CaSO4 CaSO4 और half H2O, POP, plaster of Paris, CaSO4 solid, burnt plaster, जिसको अपन हाइड्रेट नहीं कर सकते, जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलाउ नहीं करता है, इसे burnt plaster, CaF2 फ्लोर्स पारी, मैं देख के बोल रहा हूँ somehow, ओके बिना देखे मुझे पता ही नहीं है ना, तो मैं कैसे बोलूँगा, तो ये दो, इतना मुश्किल नहीं है, ओनली, ओ शिट, हाँ ओके, दो दो फिंगर्स, नॉट 3 फिंगर्स, CaF2 फ्लोरस्पार, Ca3PO4 ट्वाइस, फॉस्फोराइट, क्या नाम दिया इसको, MgCO3 मैग्नेसाइट, important, MgCO3 is magnesite, MgOH twice is magnesia, MgCO3 is magnesite, yes, I guess similarly CuCO3 copperite रहेगा, we'll see, okay, और क्या था, Ca3PO4 twice, that's phosphorite, okay, and CF2 is fluorspar, that's using flux or something, I don't know, ये तो मुझे पता है, CaOS हो गया, वो पीछे बॉर्डर, CaSO4.7H2O, some sulfate, I don't remember it, okay, that's Epsom salt, huh, interesting, MgCl.H2O, that is bischofite, oh god, ये नाम कोई याद नहीं रखने वाला है, this is just too much, that's asbestos, oh god, ये क्या है, talc, Mg2Si2O5, huh? There's another silicate. Isn't this just the pyrosilicate? Wait, क्या हो गया ये? Okay. Okay, MgSO47H2, that's Epsom salt. I have to remember that. चलो एक बार पूरा स्टार्ट से, बिना देखे मैं सिर्फ कंपाउंड देखूंगा, नाम नहीं देखूंगा. Na2CO3.10H2O, right, that's just washing soda, you know that. Na2CO3.H2O, that's crystal carbonate. Na2CO3, that's soda ash, yeah. NaOH, caustic soda. Na2SiO3, that's soda glass. And NO3, that's chile saltpetre. Na2SO4, okay, आगे कुछ लिखो, dot NH2, that's Glauber's salt, और अगला borax होगा, just know that, with 10H2. Without NH2, we know it's gonna be just, it's still borax, just इसको नाम borax नहीं पड़ता है, क्या होता है उसको, मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, whatever. KNO3, that's Indian saltpetre, और तो उसके और दो नाम भी थे, भूल गया उनको, नीचे KCl सिल्वाइन, K2CO3, और है इसमें नहीं, okay, just K2CO3, that's pearl ash or black ash, right. I think K2SO4 is, right, I think K2SO4 is potash, but we'll see. CaCO3, that's limestone. CaO, quicklime, MgO, magnesia, wait, नहीं. MgO is not,
Oh, MgO is magnesium. MgOH twice is something that's milk of magnesia. Okay, of course. Right, okay. MgO is magnesia, MgOH plus milk of magnesia. MgO plus MgCl2. That's cement of magnesia or soil cement. Okay. So MgOH twice, that's milk of magnesia. Aqueous of course. Solid मुझे पता नहीं क्या बोलना चाहिए उसको. Magnesium hydroxide. Okay. CaOH twice. अच्छा तीन है इसमें. So याद कर. Suspension would be milk of lime. It's like parallel to milk of magnesia. Powder is slaked lime. And और क्या है? Solution is lime water. Okay, CuSO4. Wow, मेरा गलत कर रहा है. Oh, okay. Dot. Sorry, that's CaSO4. CaSO4. Dot 2H2O. I don't remember the name. Calcium sulfate. Oh god. Yeah, I remember the name. CaSO4, huh? Gypsum. Oh god, मैं इतना सीधी नाम कैसे भूल सकता हूँ? That's gypsum. CaSO4 at half H2O. Right. That's POP. CaSO4 solid. That's burnt plaster. गाने को क्या हो गया? इनकी टून खराब क्यों हो रही है? CF2, that's fluorspar. Ca3PO4 twice, that is phosphorite. Yeah, okay. And what else? MgCO3 magnesite. मुझे पूरा यार सीक्वेंस में याद आ रहा है. बढ़िया. Okay. MgSO4 at 7H2, that's Epsom salt. और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ. Don't doubt it. CaOCl twice. वो तो पता है. Just bleaching powder. MgCl.H2O, right? Oh god, I don't remember. Okay. Yeah, I don't. अपन ने यही तक किया था ना, I guess. इसके आगे किया था क्या अपन ने? नहीं, अपन ने यही तक किया था. So ये है bischofite. Okay. MgCl.H2O and MgSO4.H2O, that's caesarite. Potash alum, everyone knows. Just K2SO4 L2 SO4 thrice. Okay. Okay. So not Al2O3, it's Al2SO4 thrice. And wait, do you see यहाँ पे SO4 है और यहाँ पे oxygen है अलग अलग. Okay, wow, that's awesome. So similar to potash alum, you have feldspar. This thing. What else? कोई और इससे पोटेशियम और एल्यूमिनियम है? नो, दो ही है यहाँ पे. उसके अलावा मैग्नीशियम वाला है, अलॉन्ग विद कैल्शियम. ये अच्छा है. सिर्फ 3-4 एक साथ मिक्स कर दो एंड यू विल गेट सम काइंड ऑफ क्रिस्टल. बहुत ही बढ़िया. एंड उनको नाम दे दो. परफेक्ट टॉर्चर फॉर स्टूडेंट्स. ये लास्ट के नाम मुझे याद करने की इच्छा तो नहीं हो रही है. You have to keep going though. Okay. So पहले तीन MgCl.H2O, that's bischofite. ये ऐड तो नहीं है? नहीं. Okay, कहाँ पे था मैं? Right, 26, 27, 28. MgCl.H2O, that's bischofite. MgSO4.H2O, that's caesarite. And CaMg thrice SiO3 4, that's asbestos. Interesting. Okay, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ ये तीन. MgCl.H2O, that's bischofite. MgSO4.H2O, that's caesarite. And CaMg thrice SiO4, that's asbestos. And I guess next वाला क्या होना चाहिए? Talc. और नेक्स्ट वाला क्या है? ओके, स्पॉट. ओके, नेक्स्ट वाला मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली. ओके, दैट इज पॉलीहेलाइट.
बाप रे, सारे सल्फेट्स ही इसमें, और सिर्फ हेलाइट यूज कर रहे हैं। व्हाई दिस इज नॉट लाइक पॉलीसल्फेट, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? कितना इजी रहेगा वो नाम। नहीं, बट नहीं, पॉलीहेलाइट। वाओ। पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, 6H2O, दैट्स पॉलीहेलाइट। Oh God. K2O, Al2O3, SiO thrice 6, feldspar. Oh, and just oxygen को remove करो सल्फेट से, and oh shit, यहाँ पे SiO3 है, मैंने पहले देखा ही, मुझे लगा यहाँ पे H2O3 है, but no, it's dot 6 SiO3. That's feldspar. K2SO4 dot Al2SO4 dot 12H2O, that's potash alum. KCl dot MgSO4 dot MgCl dot CH2, that's K-nite. Oh, I think this one is easier. KCl dot MgCl dot 6H2, that's carnallite. ये 32 और 34 इजी है, राइट? ओके, मतलब ये याद करना पड़ेगा, बट ये हो जाएगा, इतना बुरा नहीं। So KCl dot MgCl2, that's carnallite. KCl dot MgCl2 carnallite. KCl dot MgCl2, it's potassium chloride, magnesium chloride, carnallite. Potassium chloride, magnesium chloride, magnesium sulfate as well, that's K-nite. Potassium sulfate, aluminum sulfate, that's potash alum. Potassium oxide, aluminum oxide, that's feldspar. Potassium sulfate, magnesium sulfate, calcium sulfate, it's polyhalite. Magnesium pyroxylate, okay, that's talc. Okay, I guess this must be enough. फिर ठीक है, we should take a break now. See you guys in the next video. तब तक मैं कुछ चार्ज के लिए तो अपने फोन करेगा। Bye.